yesterday's session. It is my great privilege and honor to extend a warm and heartfelt welcome to our esteemed resource person, Dr. Bharat Bhushan. Dr. Bharat Bhushan is currently serving as an associate professor in the Department of Computer Science and Engineering at the School of Engineering and Technology, Shaka University. He is a distinguished academician, researcher and mentor whose remarkable contributions to research and higher education have earned him recognition at both the national and international levels. One of his most notable achievements is being recognized among the world's top 2% scientists by Stanford University, USA. Dr. Bharat Bhushan completed his B.Tech in Computer Science and Engineering with distinction in 2012, M.Tech in Information Security with distinction in 2015, and earned his Ph.D. in Computer Science and Engineering in 2021 from the prestigious Birla Institute of Technology. He has further strengthened his professional expertise through internationally recognized certifications. His academic contributions are truly exceptional. He has authored more than 200 research papers in reputed international conferences and SCI index journals, contributed over 50 book chapters, and edited 30 books published by globally renowned publishers such as elsewhere. Dr. Bharat Bhushan has delivered keynote addresses and served as a resource person in numerous faculty development programs and international conferences across countries including India, Iraq, China, etc. His association with leading professional bodies including IEEE as a senior member further reflects his commitment to academic excellence and professional development. Sir, we are indeed privileged to have a scholar of your stature with us today. We are confident that your vast experience, profound knowledge and valuable insights will inspire us and all the participants and make this session highly enriching and intentionally rewarding. On behalf of the department, I extend our heartfelt gratitude to you for graciously accepting our invitation despite your busy schedule. Your presence has truly added immense value and prestige to this faculty development program. Now I invite Dr. Sarita Garg, HOD BCA, to kindly present bouquet and memento to sir. Sir, we are honored to have with you. Please deliver the address. Everyone, first of all, apologies for being late and keeping you all waiting. It was not in anyone's hand. This was good. So in this lecture today, what I'm going to discuss is, see, we all write papers. What major challenge that we face in current scenario is that most of the papers are either test rejected without getting reviews. The papers, we are not given the review comments, we are given the comment like your paper is out of scope, your paper is not novel, and we have done our hard work, we have structured a manuscript with all our hard work, and it is saying, the journal says the paper is out of scope or not novel. Today in this lecture, what I will try to do is, I will try to answer those two questions on your behalf to the journal. How do we advocate novelty in our work? How do we find journals so that at least they are not able to say out of scope? I think I had shared one or two questions just now to find certain journals,
related to your research area. This discussion is neither for management nor for computer science application. It is in general. This is applicable to all. We all find our research journals in our own field. So why this is very, very important, I'll just let you know. First of all, we must know the reason of rejection. Why the papers are being rejected. Correct. So I will say one of my recent interaction with a very renowned editor-in-chief of a journal, Q1 journal of SCI, that is Journal of Network and Computer Application. His editor-in-chief, I just had a discussion with him. He said, I was there in an international conference and we had a, discussion. I asked, sir, when I was a PhD scholar, I published 3 papers in your journal. 8-10 years back, I submitted 3 articles and all the 3 were accepted. 100% acceptance rate, at least for me. Now, in the last 3 years, I had submitted 3-4 articles. All were rejected because of novelty, all were rejected because of out of scope. What is the reason? I just want to know, did I not learn anything in the last 7-8 years? Means I have not gained any expertise in the last 7 years. Did my expertise deteriorate? So that initially it was accepted, now it is not getting accepted. He paused for a minute and then he answered. His answer was really elaborate. He said, dear Bharat, when in 2018, 2019, 2020s, at that time, that is pre-AI era. During the pre-AI era, we used to get 1200, 1400, 1500 papers. This year, 2025, we received 70,000 papers. Now, in order to accept or reject with comment that you are saying, I need 2.1 lakh reviews. For 70,000 papers, 3 reviewer is a must, 3 reviews must be there, 2.1 lakh reviews are needed. In order to get 2.1 lakh reviews, I have to send 211 lakh review requests. Because out of every 100 person, only 1 accept the review request. And out of 10 who has accepted the review request, only 1 submits the review on time. Let's ignore that. Let's ignore on time review submission, response submission. They submit 1 out of 10 and out of 100, 1 agrees to review. Do you think there are 211 lakh reviewers existing in your domain? The question had its answer, his explanation has its answer, why the papers are being rejected. Because, one more story, I will begin it with a story. What happened? When I was during my PhD tenure, I did my PhD from BIT Misra, IIT Kharagpur project. When I was in my PhD, at that time, my guide scolded me day and night, It was, of course, 2.5 years of my PhD journey. There were no papers, madam. We used to go with 3-4 pages. First we used to handwrite something, then we used to type, okay. And I am the last of that generation who did that. After me, people are not doing that, okay. So, in 2.5 years, I drafted 1 paper, okay. And that also I gave it to my guide. He asked me to get a printout. Now nobody is taking printout, isn't it? In the initial time, our guide used to say, computer पे कुछ नहीं देखना है, जो दिखा रहा है उसका printout लेके आए. So I took my printout to my guide and he made it, completely red with his pen. In the printout, this is a mistake, this is a mistake, this section should go there, this section should go there. Today I am giving a lecture, but still if my guide comes and sits here, he will find hundreds of mistakes in my PPT. That's the work of a guide, isn't it? So, it took 2.5 years. Another story, that is case 1. Case 2, last week, I am taking a research methodology subject in my university. I told my student,
कि you have to first of all make an abstract, then you have to make an outline of the paper, and then we will draft the entire paper in this semester. One of the student, I motivated him. He was a 5-pointer. I said, you know, you might have watched a movie 6 point someone. You know, you might have studied a book. He was in IIT. He did this. He did that. And nowadays we give example of Kung Su Wangdu of 3 Idiots. He was not at all studying. His grades were, even though his grades were good, but he was more into invention and all. I gave him all this example. I motivated him to the best of my ability. He got extra motivated. He got extra motivated. Next day, he came up with a 40-page manuscript. Next day, overnight, he has drafted a 40-page manuscript that looked far better than I wrote in 2.5 years. Extra motivation. How? Exactly because of AI. Anyone in today's world, anyone who has, I have zero knowledge of management, I can write a paper that will be far better than someone who has written it from the management background with 100% honesty. So, in this era, it is very, very difficult to find what is genuine, what is fake. Okay. So, that is the biggest problem, and thousands of manuscripts being submitted daily to SCI index journals. Acceptance rate is 5 to 25%, but this number is far less. You will get this number on the Elsevier and Springer website, but actually this number falls down to 0.05. 1 or 2, but on the Elsevier website you will find the acceptance rate will be 7%, 21%, like that. Getting my point? So, this is the acceptance rate by them, but from my experience I say it is far less below 0.5%. Many rejections do happen before peer review even begins. Yeah, this is true. So, research quality alone does not guarantee acceptance. This is true. Only the quality of work that you have done, only the research problem that you have does not actually guarantee the acceptance. In this lecture, we will see what are the few things that can supplement your findings. You have done your work, your methodology is good. I am not here to comment on your methodology. How can you uplift your methodology? How can you enhance your quality? We will see today. So, two types of journal rejections we have. Either it is a desk rejection or it is a peer review rejection. So, in case of desk rejection, these are the 4 major reasons: scope mismatch, poor writing, low novelty, formatting issues. So, formatting issues is of minimal concern. Okay, nobody is asking about that. Scope mismatch is something that I will tell you in detail in this lecture. Poor writing, yes, we have to enhance the writing. For that also we will be saying. Low novelty, I am not going to comment on how you will make your work novel. I will comment how to present your existing work in a way that it looks novel. I am clear. I am not going to tell you how to make your work novel. आपने जो किया बहुत अच्छा किया, कोई भी अपना पेपर खराब नहीं लिखता है. We do not do our work, we all do honestly. What I will do is how to advocate about yourself. Talking of this methodology, insufficient experiment and unsupported conclusions, I am not going to comment more on this side. You know better than me about your research. So, top reasons for rejection will be either scientific or technical or editorial, or it will be ethical. Considering the scientific novelty of the work, if there is less novelty in the work, okay. Now, novelty is you can say a debatable word. You will say, sir, this is novel. Your supervisor will say, no, it is not novel. आपने कुछ नया नहीं किया. Getting my point? Now, I have to talk on behalf of both supervisor and scholar, because most of our
us in this, in this room are more experienced, highly experienced, and you all are supervisors also. So I can see that. So I'll not talk anything, against the supervisors. So novelty and then weak research question. Research question, every paper. See, only thing when we draft a paper, it should answer whether this paper is going to contribute something. If you answer to one question that is this paper publishable or not? Does this paper deserve publication? And you have to answer that in your paper itself. Why your paper should be published, that we have to answer within our paper itself. In that case, reviewer will not be able to give you vague comments like not novel, poor writing. These are some vague comments. Good comments are instead of methodology X, use methodology Y, compare with these two papers, and good thing is those two papers should not be of the reviewers itself. What we are seeing nowadays, we cite these papers, compare with that, and if you find the author of these papers, you will see that there is common author, and 110% that common author is your reviewer. So these things need to be taken care of. Then technical insufficient validation, poor statistical analysis, weak experimental design, and very important reproducibility concerns. Whatever paper you write, whatever methodology you follow, that should be reproducible, and that is what we have to motivate to all our scholars. Do not fabricate the result. When you write a paper, it should be reproducible, means whatever methodology you have used, if a person XYZ from XYZ country reads your paper, he should use the same methodology and get at least comparable results. It is not that you are getting efficiency 98 and he is getting 28 with your methodology. So reproducibility concern is another challenge. Then comes scope mismatch, poor manuscript structure, and language issues that we'll be seeing later on. In case of ethics, plagiarism should not be there. That is guaranteed that there should be no plagiarism. Duplicate submission, just try to understand. Plagiarism nowadays, we have two types of plagiarism, normal one and the AI ones. What is happening actually is, every university has a software. Generally we have a Turnitin. We also must know that Turnitin has different versions. We have different version of Turnitin that actually has varied cost. There is a chance that a university that has the Turnitin version is of a lower grade. It will not detect all the plagiarism that it must detect. And when it is submitted to journal, that flag will be detected, especially in the case of AI. Many times you will see that in your Turnitin, it is showing AI flag less than 20%. AI flag percentage and then no percent is given, it means it is less than 20%. But if the journal is using its version of Turnitin, it will correctly detect what is the percentage. Another important thing, I fear that, see, science will answer everything. Science, technology will answer everything in future. Initially, 20-25 years back, nobody thought that we'll be carrying a device in our hand and that we have to see after every 5 minutes mandatory. Mobile phone, we cannot live without mobile phone. If there is a lecture, for example, in that also somehow, if I am also delivering a lecture, somehow I will come here, I will click and I will see if there is a message or not. Okay. Science answers everything. Science said don't go there. In a watch, you will have a mobile phone. Okay. Now seeing watch will also become difficult. Somehow science will give answer to that. Similarly, technology will answer this plagiarism also. We are dumping, I should use the word, not every one of us, but majority of people nowadays, they are dumping AI
generated content on IEEE Explode, Springer, elsewhere, Science Direct, wherever it is. Somehow, currently we draft a manuscript, we somehow escape, and I will not tell you how to escape, we somehow escape this and we get it published. But please be assured, from my little experience, there will be a software very soon in the coming 1, 2, 3 years, because this is a genuine problem. There will be a software 1, 2, 3 years down the line very soon that will be run on IEEE Explore itself, where we have thousands, not lakhs of papers, millions of papers I should say, and that software in one run will clear these are the papers that are AI generated. I am damn sure science and technology will do this someday. कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाएगा कि IEEE Explore में ही चला दिया जाएगा. Whatever millions of paper IEEE Explore database has, it will find out this is the list, these are the papers that are AI generated. We must not in any case delay your PhD by 2 years. Doesn't matter. Most of the good universities, for example, IITs, you will say कितने साल में PhD होता है? किसी छोटे यूनिवर्सिटी में जाएंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में they will be saying 3 साल. IIT में जाइए, गाइड पहले ही 5 उंगली तो गारंटी ओपन करें, ठीक है? UGC says, regulation says there should be 2 SCIs. गाइड के पास जाइए, sir, I want to take your guide. 5 SCI minimum. I have not awarded any degree before 5 SCI. This is what the guide says. I am also a guide, you are also a guide. We try to teach scholars in the first 2-3 years. They do their first, second paper with all the hard work that we put in the scholar. We don't want them to. We want them to give at least 2-3 more papers. This is true. This is true. So, plagiarism, of course, is a problem. This should not be, appreciated. Duplicate submission. Now, there is no concept of duplicate submission now. You cannot do it because 90% of the journal, as we all know, have moved to a central submission system. 90% of the journal has moved to a central submission system. So, duplicate submission is not possible. Recently, I was saying this that was a scholars FDP. Okay, and of course that was an NIT scholar. So he was very, very intelligent. So what he said, कि सर डुप्लीकेट सबमिशन कर सकते हैं. हमने बोला कैसे भाई बताइए. कह रहा सर एक ही प्लेटफॉर्म है, why don't we change the title, change the abstract a little bit and submit. Whichever is accepted will get it accepted. This is I think 6 months back. And recently if you have submitted your paper in the last 3-4 months, you will come to know that there is something called reference checking and reference matching. So not only title and the abstract needs to be changed, you need to change all the 60 references that you have given in the paper, otherwise journal will identify. Journal can identify that these 60 references have been given in this 60 references and you are the author of both, only the title is changed, it will ban you. So there is no concept currently, again there is no duplicate submission. If any of you have some idea of duplicate submission, please share with me after my lecture, okay? So it will be very helpful. Here I have to add something. Although I have not submitted it to the journal, I was supposed to present a paper at a conference during my PhD. I did not have the paper ready at that time, so I changed the title of my previous paper, changed the abstract a little bit. I presented it at the conference, that's it. I did not submit it. Had this lecture not been recorded, I would have answered. Moving to... Sir, आप आंसर कर दीजिए, this recording is not forwarded. When you want to get abstract. Like I am doing my PhD, my timeline is coming now and I have not, it's been a year like to get a one review comment from that journal and then I have to resubmit the paper to get the more review. That is totally, ma'am, I'll say it is totally unfortunate. और जो आज से पहले हम लोग कहते थे ना कि यार पेपर जो है लक का गेम है, it is now boiling down to that only.
पहले कहते थे कि लक का गेम है, तब था नहीं, तब नोवेल्टी का गेम है, कैसे आप लिख रहे हैं उसका गेम था। अब थोड़ा सा ऑलमोस्ट इट इज लाइक मेरे केस में तब भी लक का ही गेम था। मतलब मेरे गाइड ने मेरे को 2 साल तक एक पेपर पर अटका के रखा था, पूरे 2 साल तक करने ही नहीं दिया। That again- बहुत सबमिट भी नहीं करते। I have submitted 3 after 3 reviews. I have submitted the paper. Still, I have not received the acceptance from the journal. I don't know whether I'm going to. these things are actually, because the journals have also hired so many editors, and this thing will only be solved if the editor and the reviewer are given something in response to their social work. Who will say, for example, you are a scholar currently, madam, No, faculty. You are done with the PhD. How many papers you have reviewed in the last 1 year? 2. That is the problem. You must have at least reviewed 50 to 100 papers in a year. That is a social service. We are not ready to review. How many papers you have reviewed in the last 1 year, madam? I'm still doing my PhD. I'm waiting for the acceptance to complete When my you are- PhD. sir. We don't get time. That's the problem. Yes. You don't have time. You just try to understand. I am not blaming anyone. Just try to understand. I am not pointing out to you. A public means a private university assistant or associate professor is not getting time to review a manuscript. You are very much occupied in your normal work, day-to-day hour work, and little research work. How can we expect the renowned persons, the scientists and all, who are actually the editors of the journal, who also take lecture, who do their research, guide pupil and then review your paper? Getting my point? So this is a bottleneck. ये एक थोड़ा सा issue है, and until and unless everyone has some motivation, I was a person who used to review hundreds of papers every 1 month time. 60-80 papers I used to review. I was not able to give much time, but at least 2 hours I used to give for every paper. Because my guide said, when I started my PhD, he said that review 200 papers before writing your first paper. That's why it took 2.5 years. Getting my point? But now I don't have time to even review 2. Madam, you were able to do 2 reviews. I am not able to do that also, because of the work commitments and other things. Okay. So yes, that is the problem. We can only hope that it gets solved. Just for example, there are certain journals like MDPI. When you review, you get a voucher, reviewer voucher. 100 CHF, 50 CHF. When you aggregate those vouchers to make 2400 Swiss francs, then you can publish a paper without paying anything. That again becomes a motivation. When we get a request for review, we search कि MDPI वाला है, ये 100 CHF दे रहा है, 50 दे रहा है, 100 दे रहा है, जल्दी सबमिट करो, 50 दे रहा है, थोड़ा लेट करेंगे. Getting my point? So that people are working towards it. Hopefully we'll have some solution. So next is data fabrication. Data fabrication should not be done. That's what I said. Your results should be reproducible. Here comes the most important. Choosing the right journal. I had given a task. You all have chosen some journals. Okay. What did you see to choose a journal? First of all, where did you go? SCI Marco, and we search for the quartile of the journal. Okay. Anything else? Actually, when I choose my journal, actually it is from the references. The references of the paper that you have. Yeah, that I have chosen. Anything else? Chat GPT. That is the worst thing to do for journal selection. I'll tell you, madam. That is, Chat GPT is the worst thing for journal selection, because I will tell you the reason for it. Web of Science. Springer and Elsevier are the 2 major bodies we all know. Why don't we trust them? Type in your system Springer Journal Finder everywhere. I always try that. मैं बता रहा हूँ उसमें करना क्या है? There is a twist. Springer Journal Finder, you paste a title, you paste an abstract.
It will give you, just try if you have internet connectivity, you can try it out. Springer Journal Finder. Right in Google you will get it. Springer Journal Finder. Right in Google. You will get the first result. Enter your Ministry of Extract. हाँ. हाँ ये जर्नल एंड हाँ एग्जैक्ट. अब इसमें आपसे क्या कह रहा है, वो टाइटल पूछ रहा है या एब्स्ट्रैक्ट पूछ रहा है. पुट 1 or 2 लाइन्स एनीथिंग. डोंट गिव द एंटायर एब्स्ट्रैक्ट. 4-5 लाइन दे दीजिए जो भी आपको देना है. पुट द एब्स्ट्रैक्ट इन द टाइटल प्लीज. So just paste it and then you will get some journals, okay? Now the result that you are getting, आपके सामने result आया है. Now what you have to do, all the journals name ChatGPT or whatever Web of Science, whatever you say, you will get it there. This is one way. Another website is for Elsewhere Journal Suggestion. Another, simply write in Google Elsewhere Journal Suggestion. But this is not the end of the story. Don't close that. I'll tell you what we have to do in that. Second, Elsewhere Journal Suggestion. I give you 1 minute of time to analyze and tell me the best journal, and then I'll ask you what you have analyzed. I don't want the answer of the journal. I want what you have analyzed. 1 मिनट में आपने ये देखना है कि कौन सा बेटर है आपके हिसाब से और आपने क्या किया. There are number of journals. Shortlist any 2 best according to you. From both of Anything from any number. Now Elsewhere has also suggested a journal and Springer has also suggested a journal. Shortlist any 2 in your mind. How? There are a lot of things given like impact factor, acceptance rate, time to first decision from a journal. Based on that, you have to find the best 2 journal according to you, and then I want the answer what you have seen in that. ठीक है, आगे. So answers please. I don't need the name of the journal. I only need what you have seen, ma'am. Perfect. Submission to first decision is? That is not at all true. That is not possible. सर मेरा पेपर चल रहा है यहाँ पे 3 साल से. फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केटिंग में 1 डे. अब आप बताइए. See, I'll tell you one thing. Frankly speaking, क्या जो सबमिशन डेट दिया हुआ है टाइम, is it true? वहाँ पे बस impact factor true है मैम. Only the impact factor is correct, nothing else. और आपने क्या देखा? What else you have seen? But I should say, what ma'am very rightly said, she had considered the time to decision. That should be considered and that should be of paramount importance. सबसे आगे वही है. Second, और क्या देखा आपने? बस हम देख गलत जगह रहे हैं. एक एक्सेप्टेंस रेट भी वहाँ कुछ है, वो भी देख के हम लोग चल सकते हैं ना कभी. What is the acceptance rate? We can also see that कि जिसका एक्सेप्टेंस रेट ज्यादा हो. In Springer, I think
there will be स्प्रिंगर में स्प्रिंगर में भी नहीं, तो they might have removed number of days. एक्सेप्टेंस टू पब्लिकेशन आ रहा है। कौन से पे में राशि? अच्छा, आप किसी भी ये स्प्रिंगर के किसी जर्नल को ओपन करिए, ओपन द जर्नल, लेफ्ट क्लिक एंड ओपन। ना एक्सेप्टेंस रेट कहीं है। Some journals actually give acceptance rate also. ये इन्होंने हटा दिया है, बट रहता। I'll tell you what to do. ना मैं उठा रहा हूँ। चलिए, anyways, तो two things you have to consider. One, time to decision. Another is कि acceptance rate. Time to decision आपके सामने जो लिखा है वो गलत है। चैट जीपीटी से ही आप पूछ लीजिए what is the acceptance rate, वो भी आपको गलत ही बताएगा। Acceptance rate will come around 10, 12, 15%. Answer is हमें ये जानना नहीं है। अब हमें जानना क्या है कि where shall we find the time to first decision? किसी भी जर्नल के वेबसाइट पे मेन पेज पे आपको नहीं मिलेगा। आप इस जर्नल के ऊपर जाइए and see the last few published papers. Open that paper in PDF. You will find the date in which the paper was submitted, the date in which it has received the review, the date in which it is published. That will give you the correct meaning. देखिए, आप किसी को अपना पेपर देके साल भर भूल जा रहे हैं, उससे बेटर है कि एक दिन लगा के मेहनत करके एक अच्छे जर्नल फाइंड करिए। गेटिंग माय पॉइंट? सो देखिए क्या है कि यू कैन फाइंड द डेट्स, ठीक है, एक्सेप्ट कि कितना टाइम इसको लग रहा है, 2, 4, 5 आप पेपर देखिए, ठीक है। देन स्कोप, एक चीज जो हम मिस करते हैं, one thing that we are missing every time is we are finding the journals, we are seeing the impact factor, time and all. We do not check one very important. In the last 10 or 20 papers in this journal, like 10 or 20 papers in this journal, just see has this journal published 1 or 2 papers from India or not. That is something that is mandatory for us. There are many journals that are good. Have they accepted at least 2 papers out of their last 20 from India or not? That is what is needed. आपके जर्नल में जर्नल बहुत अच्छा है, एक्सेप्टेंस रेट वेरी गुड, टाइम बहुत जल्दी। अरे जब वो इंडियन पेपर ले ही नहीं रहा है, why are you submitting and wasting your time? Audience from your country, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनके पेपर्स ये ले रहे हैं कि नहीं? Taking papers from Saudi Arabia is easy. They have unlimited funds. हमारे जितने फंड में पूरा एक एफडीपी हो जाता है, उतने फंड में वो एक पेपर निकाल रहे हैं। Getting my point? So it is very easy for taking their paper. Are they taking our papers? The editor-in-chief is from China and we expect him to give decision to our paper in 6 months. It is not possible. He will never give it. Getting my point? तो ये भी हमें देखना पड़ेगा. So not 2 things that we miss sometimes is first of all कि आपने टाइम देखना है उसके मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर जाके कब ये सबमिट हुआ था एंड ऑल, और ये भी देखना है कि इंडियन पेपर ये ले रहा है। रेस्ट एवरीथिंग, these 2 are the most trusted source, elsewhere journal suggester and Springer journal finder, कि इन्हीं में से आप कोई देख लीजिए जो ये सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। सो these are the same thing, मतलब इसका जिस्ट वही है जो हमने आपको बताया, ठीक है। Then understanding SCI index journal, most of us are more interested in Scopus index journal. So I'll just SCI आप लोग करते हैं,
SCI no. स्कोपस ही नहीं हो रहा इसलिए हाँ, तो ठीक है. What is SCI? I'll just tell you. What is SCI? I'll just tell you. There are good number of journals. There were good number of journals that belong to Scopus. People said कि सर सब Scopus है, कुछ जर्नल को शॉर्टलिस्ट करके अच्छा जर्नल बनाइए. तो they from the pool of Scopus, some journals were pulled out, titled as SCI. कहते हैं Science Citation Index. So it became very difficult because very few journals were pulled as good journals. तो कहते हैं कि SCI जर्नल जो है सो ये है सर बहुत ज़्यादा टफ. Pull some more journals from the Scopus pool. Scopus में से कुछ और जर्नल पुल करिए. It became SCIE Science Citation Index Expanded. तो पहले बना SCI, फिर बना SCIE. All the journals that are in SCI or SCIE are Scopus. But at the same time, that is 100% true. At the same time, there is something called ESCI. But not all SCI are Scopus. एक आध दो दिखाइएगा कोई जो Scopus नहीं है. Please. Article in applied psychology जैसे journal है, it is not Scopus but it is SCI. It might be ESCI, वही मैं कहना चाह रहा हूँ. It is SCI, not ESCI. So that can be an exception. मैं उसको note down करूँगा. I reframe 99% of the journals that are SCI are Scopus to the best of my knowledge. There is another thing that is ESCI that is misleading, Emerging Source Citation Index. Some of the ESCI journals can be Scopus, some of the ESCI journals cannot be Scopus. So that is the thing. Maybe हो सकता है मैनेजमेंट का कोई जर्नल हो जो SCI हो, Scopus ना हो, but from computer science background I think 100% journals are. सर आपने जो बोला सर आपने भी बोला कि ऑथर्स देखे कि इंडियन ऑथर्स के पेपर एक्सेप्ट करता है कि नहीं पढ़े. क्या हम जर्नल को एडिटर भी चेक करेंगे एडिटर इंडियन है कि नहीं? नहीं, जर्नल के एडिटर आपको इंडियन नहीं मिलेंगे, बहुत कम. Very few you will get as Indian editors. तो most of the editors will be from outside. आप बस ये चेक कर लीजिए कि इंडियन पेपर ले भी रहा है. सर मैंने ये कोशिश भी करी कि मैंने देखा अगर एक तो इंडियन एडिटर है उसके अंदर उस पैनल में, फिर मैंने उनको लिंक्डइन से मैडम कनेक्ट इंडियंस की मदद नहीं कर रहे हैं मैम, क्या बात कर रहे हैं? नहीं करते हैं. कनेक्ट भी किया सर फिर. The only thing is that some journals have policy कि हमें नहीं लेना है यहाँ, तो उस चीज को बाईपास करना है. We are not going to get any favor from some. किसी का पॉलिसी है वो लेता ही नहीं है तो क्यों? ये two types of papers we have, survey paper and a research paper. So क्या you shortlisted any such journal names which take Indian papers, maybe SCI? there are more. I'll tell you definitely from the area कि भाई कौन सा जर्नल इंडियन ले रहा है, कोई ऐसे रिसर्च बहुत सारे हैं. There are very few that do not take papers for very specific purposes. Please. सब में नहीं होगा, कुछ तो. There are two types of paper we all know, survey paper and research paper. ठीक है, तो which is easy to write, survey or research? Which is easy to write, survey or research? Easy to write. Survey is easy to write. Yes, survey is easy to write. So I'll share one story. Recently on 1st of July, I had discussion with Professor Ramji Prasad. He is the founder of 5G. He is Indian. He is in Aalborg University currently. We met in a conference. I said, sir, I like you. You can see his profile, 50,000 citations he is having. So I said, sir, 10 of your papers are surveys. I am like a fan of you. I also want to write survey paper. He told me, survey paper जो है एक्सपीरियंस लोगों को लिखना चाहिए. I said, okay. हमें तो लग रहा था सर्वे सबसे इजी है, हमने तो बहुत सर्वे लिखा, हमने तो सर्वे के वजह से हम बन गए. तो I told him, but he said, तुम गलत कर रहे हो. Survey should be written by experienced people. Why? He asked me, and I asked you all, what was the first paper that you have studied in your life? Survey or research? Survey. Means you
anyone who is young, who is starting his career, will build on a survey paper. वो अगर एक एक्सपीरियंस्ड आदमी ने लिखा है, he will give his or her insights in it. आप एज अ सर्वे पेपर का डेफिनेशन क्या करते हैं? थियरी लिखना है, 10 पेपर से लेके एक में लिख देंगे, यही है. Getting my point? That is what we are doing and we call it as a survey paper. However, survey paper's contribution is more novel than a research paper. रिसर्च पेपर आपका काम है, ठीक है, और जो उस एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करके उसके ऊपर काम कर रहे हैं उसके लिए यूजफुल है. सर्वे इज फॉर द एंटायर कम्युनिटी हु इज वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया. यू मे अननोइंगली मिसगाइड समवन. दैट्स व्हाई सर्वे बिकम्स इंपॉर्टेंट. सो अनदर थिंग, मुझे पर्सनली रिसर्च लिखने में इजी लगता है. सर्वे क्या है कि in order to get a survey paper accepted, we generally rely on the length of the paper and the number of references. हम पेपर के लेंथ और नंबर ऑफ रेफरेंसेस पे रिलाई करते हैं in order to get a survey paper accepted. That may range from 50 pages, 40 pages. अगर आप अच्छे जर्नल में जा रहे हैं तो 40-50 पेज आपको टाइप करना पड़ता है. If you are not using AI, of course. 25,000 वर्ड आप लिखेंगे. If you are doing a research work that has some methodology, that has some result, you can wind up in 6,000 to 8,000 words. So, of course, it becomes easier. We go to survey paper only if we are not confident in our research. अगर हम रिसर्च में कॉन्फिडेंट नहीं है, अपने मेथोडोलॉजी में कॉन्फिडेंट नहीं है, तो हम सर्वे पेपर की तरफ जाते हैं. हमें लगता कि ये एग्रीगेशन ऑफ कंटेंट है. इट इज नॉट. जनरल पेपर आर्किटेक्चर, दिस इज समथिंग आई हैड अ क्वेश्चन फ्रॉम द बैक एज वेल कि व्हाट शुड बी द जनरल पेपर आर्किटेक्चर. सो this is like title, abstract, keyword, introduction, literature review, mathematical background, methodology, result and discussion, conclusion and the references. We'll take some of these attributes one by one. First, of course, becomes creating an effective title. How do we create a effective title? In order to create an effective title, just try to understand. There is no rule. We don't have any written rule. Something that we gain by expertise. So I say length of the title should be limited to 8 to 15 words minimum. 8 से 15 वर्ड अगर आपका टाइटल रहता है, it will give a clear indication of what your methodology is, what you are trying to do. Then, relevant to the subject, stated in a single phrase, that is again good. Capitalization and abbreviation, these are the two things that we often miss. Capitalize each and every word of the title, except on, for, the, all these things. Rest everything should be capital. It gives a good impression. अब यहाँ से आगे जो हम बात करने जा रहे हैं, we are trying to make a reviewer a little bit fool. ज़्यादा तो नहीं बना सकते, वो भी पढ़े लिखे हैं. तो because nobody has time, everyone wants a first glance and wants to reach to a decision. आप समझिएगा. We must understand psychology. Anyone from psychology here? We must understand psychology. होता क्या है? हम जब रिव्यू करते हैं, what we do? Do you review from the first line itself? पहले लाइन से हम रिव्यू करते हैं? नहीं करते. एक इंसानी फितरत है, this is human nature. We will first give a glance to the entire manuscript. बिना पढ़े स्टार्टिंग से एंड तक हम एक पेपर के जाएंगे. Just try to understand. We go from the top to the bottom of a paper और एक मन में धारणा बनाते हैं. We make a perception. This paper is good, this paper is bad. Review comments हमारे उस धारणा को सपोर्ट करता है. अगर पहले हमें देख के लगा कि ये पेपर अच्छा है, we find constructive comment. Enhance the methodology by using this, you will get this result.
अगर हमें लगा ये पेपर ठीक है, the methodology section is not well written, authors must describe this in this particular manner. Get it? This is what is happening. तो हमें उसे इंप्रेशन अच्छा देना है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है कैपिटलाइजेशन जो है सो हमें सही देंगे तो सबसे पहले देख के लगेगा ये किसी एक्सपीरियंस आदमी है. Another thing is abbreviation. We should not give abbreviations in the title. किसी को परेशान होना अच्छा नहीं है. Abbreviations टाइटल में मत दीजिए, और अगर आप टाइटल में एब्रीविएशन दे रहे हैं, अगर आप टाइटल में एब्रीविएशन दे रहे हैं, enhance the title in the enhance that abbreviation in the title itself. You can see most of my papers are like this. For example, आप सर्च करिए E2SR2, 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 that is the first result in Google, of course. E2SR2, E2SR2, E numeric 2 SR2. हाँ कुछ हाँ एक्नॉलेजमेंट बेस्ड कुछ ऐसे आएगा पहले ये Acknowledgement based mobile SIM routing policy or हाँ. So देखिए एनर्जी एफिशिएंट सिक्योर्ड रिंग राउटिंग प्रोटोकॉल, ये नाम है उस पेपर का. नहीं है ना, नाम नहीं है. Yes, that is fine. E square SR square. अब in this the paper is accepted. Well and good. Getting my point. I am trying to outline my problem. ये अच्छा नहीं है, गलत मैं दिखा रहा हूँ. This is a mistake. I have used E2SR2, but in the title there is nowhere energy efficient secured ring routing protocol. It is not mentioned here. In the abstract you can see there is a full form for E2SR2. देखिए full form E2SR2 का abstract में दिया हुआ है, energy efficient secured ring routing protocol. This is a mistake. We must not do this. E2SR2 का full form हमें देना कहाँ चाहिए था? टाइटल में देना चाहिए. एक और आप लिखिएगा ISFC BLS, ISFC BLS, ISFC BLS, BBB, ISFC डैश दे दीजिए, ISFC डैश BLS, ISFC डैश BLS, Intelligent Secured Fuzzy Clustering Algorithm. This is what a title should look like. ISFC BLS, so we have a full form there. Intelligent Secured Fuzzy Clustering Balanced Load Subcluster Formation and exactly following the capitalization. देखिए E2SR2 में capitalization भी नहीं था. In E2SR2 जो पहला आपने ओपन किया था, there was capitalization issues also. Yes. Now, the question is from ma'am, why do we write ISFC BLS? Why did you write E2SR2? Just to create an impression in reviewer's mind, I am doing something novel. Type another FLEAC Bharat. FLEAC Bharat. Space Bharat. FLEAC Bharat. हाँ, fuzzy logic based energy adequate clustering hierarchy. FLEAC space. Now here you see that is fuzzy logic based energy efficient energy adequate clustering protocol for wireless sensor network using improved grasshopper optimization algorithm, whatever it is. आपको इसके डिटेल में नहीं आना है. अब आप तीनों टाइटल को एक एक करके ओपन.
Open the first, second and the third title one by one. सबसे पहले आपने E2SR2 ओपन किया था, वहां पे मिस्टेक थी. Just see the mistake in A2SR2. The mistake is capitalization is not there. E2SR2 have not been explored properly. ठीक? कैपिटलाइजेशन मतलब ये कैपिटल M capital, R capital, C capital. So that is not there. Come to the second one, ISFC BLS. इसमें कैपिटलाइजेशन है, ISFC का फुल फॉर्म भी है, WSN का फुल फॉर्म नहीं है. There is no full form of WSN. Come to the third one, LEAP. Here fuzzy logic based energy efficient clustering protocol, capitalization is also there, LEAP is also expanded, and I have not written WSN for wireless sensor networks again. So with time these things, I have written these papers, all the three papers that you are seeing, these are my PhD papers. So all the three papers are my PhD papers. तो नाम देने से क्या होता है कि थोड़ा सा ऐसा लगता है, बिकॉज हम लोग काम करते हैं, मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ, एंड हियर इफ एनीवन कंप्यूटर साइंस में कौन है अगर तो वी एक्चुअली रिलाई ऑन प्रोटोकॉल्स. प्रोटोकॉल जो वर्ड है दैट इज अ फैंसी वर्ड इन कंप्यूटर साइंस. अब प्रोटोकॉल बनाने के लिए हमने सुना है AODV, हमने सुना है DSDV, है ना, एड हॉक ऑन डिमांड वेक्टर प्रोटोकॉल, DSDV, FTP, TCP, IP, ये वो बहुत सारे प्रोटोकॉल सुने, तो हमने भी अपना बना दिया ये लोग. गेटिंग माय पॉइंट? तो उससे थोड़ा सा अच्छा लगता है और उसका कोई दूसरा रीजन. सो टाइटल, देन वी मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट. So abstract क्या है? Abstract is of two types basically. Based on the content, we have two types of abstract. Either it is a descriptive or it is a informative type of abstract. Abstract या तो descriptive होगा या तो informative. Descriptive abstract has purpose, objective, methods, but there is no results and conclusion here in descriptive abstract. And in case of informative abstract we have all the sections. मतलब descriptive में आपने क्या किया सब डाल दीजिए, result and discussion आपने नहीं किया. In informative you have to include everything. Based on the organization you will see two types of abstract, structured and unstructured. Structured में क्या होता है? In Science Direct, mostly elsewhere journals, you will see that they have a separate subheadings. They have a separate subheadings for their, in the abstract. That is a structured form of a abstract. I'll just show you. For example, let's open Science Direct. देखिए ऐसा एब्स्ट्रैक्ट आपने अभी तक शायद देखा होगा कहीं पे, where we have the objective, we have the method, we have the result, we have the conclusion. That is a structured form of an abstract. And what we mostly write is a unstructured form of an abstract, where everything is written in the form of a chunk, one paragraph, 150 words we write. That is the unstructured form. It actually depends on our culture, it actually depends on our country origin, and also sometimes it depends on the journal requirement. Most of us are focused on writing a informative and unstructured form of abstract, जिसमें रिजल्ट और कंक्लूजन भी देते हैं और साथ में हम देते हैं उसको एक पैराग्राफ में एक चंक. I will be focusing on what actually is a informative unstructured abstract. We have
to state background, purpose, motivation, problem, methodology, finding, implication, conclusion, all in 8 to 10 lines. Agree? ये सारा चीज आपको देना है 8 से 10 लाइन में. First of all, just divide the entire abstract. Just divide the entire abstract into 2 parts. Divide the entire abstract into 2 parts of 4 to 5 lines each. 2 पार्ट में बनाइए, 4 से 5 लाइन. पहले 4 लाइन में क्या होगा, लास्ट के 4 लाइन में क्या होगा, अब इसको देखते हैं. रफली स्पीकिंग, पहले 4 लाइन में जो हो गया है उसको दीजिए, आगे के 4 लाइन में जो आपने किया है उसे दीजिए. 8 to 10 lines, 4 to 5 lines, give it to what has happened earlier. Remaining 4 to 5 lines, give it to what you are going to do or what you have achieved. For example, background of a research area, it is already existing. Purpose and motivation, research gap, problem, all these things are already existing. इसमें आपका कोई काम नहीं, problem कुछ है उसमें आपका कोई रोल नहीं है. So that is the first part. 4 lines summarize background, purpose, motivation and the problem. Remaining 4-5 lines dedicate to what you have done, that is methodology. 2 lines. Finding, 1 line. Implications if any, 1 line. Conclusion. मतलब आपने क्या किया, आपने कुछ मेथोडोलॉजी किया, कुछ फाइंडिंग हुआ, कुछ कंक्लूजन हुआ, 4 to 5 lines. Therefore, any paper that you will open, in the middle of the abstract you will find in this paper comma. कोई भी पेपर आप दुनिया में ओपन करेंगे, हर पेपर के बीच में मिडिल ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट में you will find in this paper comma. Getting my point? तो in this paper comma क्या है? In this paper is this arrow. इस arrow से पहले कुछ था, इस arrow के बाद कुछ. That is in this paper. So this is how we craft our abstract basically. 150 to 200 words of course in one paragraph. We give an abbreviation if in the abstract we have to give the full form also. One very important thing, abstract is not a part of your paper. Abstract आपके पेपर का पार्ट नहीं है. जब हम बचपन में क्लासवर्क नोटबुक, होमवर्क नोटबुक में कवर लगाते थे, ब्राउन कवर वी यूज्ड टू डू, है ना. वो जो ब्राउन कवर है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट है. एब्स्ट्रैक्ट हमारा कॉपी का पार्ट नहीं है. Getting my point? So that is one thing. If you have given a short form in an abstract, you need to expand that in the abstract itself. And for example, WSN अगर आपने लिखा है abstract में, expand it as wireless sensor network in the abstract. We also know one line, sir. If you have expanded something once, you must use abbreviation thereafter. But एब्स्ट्रैक्ट में अगर आपने एक बार इनहेंस किया है, आपको इंट्रोडक्शन में भी एक बार उसको इनहेंस करना होगा. You will have to give the full form both in abstract and in introduction. So, moving on to introduction. Sir, can we we are not expanding the term in the abstract and then we are writing the keywords. Can we expand it in the keywords and not in the abstract exactly? See, madam, there is no written rule that we have to expand in the abstract. There is no written rule, but if it is in the keyword, according to me, it should be acceptable. Because keyword is also not a part of a paper. Yeah. Keyword is a part of the abstract. Because तो अगर keyword में expand कर रहे हैं तो abstract में expand करने की जरूरत नहीं. Sometimes we have a problem of plagiarism. Actually जो full form लिखते हैं ना, तो इसमें plagiarism आ जाता है, तो हम दोबारा लिखना नहीं चाहते. तो I actually suggest to avoid such words, क्योंकि आपको ये नहीं पता है, रिव्यूअर के सामने आप कभी जाके ये नहीं कह पाएंगे कि हमारी ये गलत है, तो हमारे सही को काट दे रहा है, ठीक है, वो तो फिर भी उसके हिसाब से गलत है. तो we should not take chance, even especially now जबकि बहुत मिन्नतों से पेपर रिव्यू जाता है. So yes. Sir,
जैसे आई एम फ्रॉम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो हमें यूज़ करनी होती है, वो हम चेंज नहीं कर सकते, और उसके ऊपर हमारे रिजल्ट्स बनते हैं, तो वो इक्वेशंस में प्लेगरिज्म आ जाता है कि भाई आपने ये प्लेगराइज कर दिया, हम देखिए चेंज मैम, नहीं कर सकते। it is all की how you can write something. जैसे मैथमेटिकल बात की आपने मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से, मैथमेटिशियंस आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन कि किसी को घुमा देंगे कैसे तो कोई समझ भी नहीं तो वही पाएगा. करना पड़ता So, है, but basic question is because I can only say कि only change the nomenclature throughout. That is what we actually do. वही We can also करते हैं। use the image of that formula if it has been repeated over the years and years. In those cases of जैसे x square is equal to y square plus 2as, अब हम उसको कैसे चेंज फिर करेंगे? मैंने अपने ये मेरे PhD के टाइम का प्रॉब्लम था, तो मेरे फर्स्ट पेपर में इसीलिए क्योंकि बेसिक इक्वेशंस यूज़ हो रही थी तो प्लेजरिज्म बहुत हाई था, तो नेक्स्ट पेपर में हमने इक्वेशंस को ऐसे लिख दिया कि वो लगा ही नहीं कि वो यूज़ हो रही है, बस सही है, यही करना है. कॉन्स्टेंट्स बना दिए, कॉन्स्टेंट्स आपने डिफाइन कर दिए, दैट वाज द ट्रिक दैट आई यूज्ड एंड Everyone do the same. We cannot आप ये समझिए, एक आदमी एक लाइन लिख के चला गया न्यूटन, आज तक उसको पढ़ रहे हैं. Getting my point? You cannot expect each and everyone in this room to come up with a new equation, a new idea. जो प्रॉब्लम आपने बताया है, the same problem we faced in there is a leech protocol in clustering, low energy adaptive clustering hierarchy. That leech protocol has been enhanced I think more than 10,000 times. अब जिसको भी साइट करना है उसको चेंज करके लीच को तो साइट करना ही है. सबने अपना अपना क्रिएटिविटी लगाया, हम कितना भी दिमाग लगा लेंगे वो प्लेगरिज्म में आएगा. एंड दैट इज व्हाई यू आर अलाउड 10 to 15% ऑफ प्लेगरिज्म. ये सब बेकार बात है कि सर प्लेगरिज्म कितना होना चाहिए, 2% करके. कई बार बच्चे आते हैं जोश में 2% प्लेगरिज्म है सर. अरे 2% हो ही नहीं सकता, गलत किया है फिर तुमने कुछ. दैट इज द थिंग. 10, 12, 15% प्लेगरिज्म इज नॉर्मल, वो होगा. वी कैन नॉट चेंज एवरीथिंग. इफ यू चेंज एवरीथिंग द मीनिंग विल बी लॉस्ट. 2% प्लेगरिज्म कहां से? या मूविंग ऑन टू इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन इज नथिंग बट अ एनहांस्ड वर्जन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट. जो आपने 10 लाइन में एब्स्ट्रैक्ट लिखा है उसे 5 पैराग्राफ में लिख दीजिए. दैट विल बी द इंट्रोडक्शन. उस 5 पैराग्राफ में 2 पैराग्राफ फिक्स्ड है, दैट इज द लास्ट 2 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट. विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ इन इंट्रोडक्शन, रिसर्च क्या है? Contribution. That is the second last para of introduction. Every introduction last para is the remainder of the paper is organized as follows. Section 2 present this, section 3 outline this, section 4 highlights this. उस रिमाइंडर से जस्ट पहले वाला पेपर जो है that is the most important. पेपर कंट्रीब्यूशन. आपके पेपर का कंट्रीब्यूशन क्या है? अब देखिए, हम जब स्कॉलर्स होते हैं तो एट दैट टाइम वी लव आवर पेपर मोर देन एनीथिंग, बिकॉज वी आर द मोस्ट डिस्परेट एट दैट टाइम कि दुनिया में जो हो जाए मेरा एक पेपर में. Getting my point? We put our heart and soul in the paper. ठीक है? We have to advocate that जो है यही है भाई, इससे आगे कुछ नहीं है दुनिया में. For that we have to use certain harsh words in our paper. For example, in order to enhance the contribution, let me say I am writing a paper on this particular word. I'll write, to the best of my knowledge, there is no water of any other brand that has given me the satisfaction to the level that I received from this. To the best of our knowledge, there is no other protocol that कर देते मैडम, तुम 1 घंटे तो नहीं अभी तुम्हारी चाय आ गई. चाय आ गई. ठंडी लगी. नॉर्मली से बिठाई थी मैंने चाय. ठीक. Let's join for the tea break. So we'll continue from the introduction because it is a new thing. In the next. Talking of introduction, abstract का enhanced version हम कहते हैं introduction is the enhanced version of the abstract.
We have written 10 lines in the abstract. We have to write 5 paragraphs in the introduction, approximately. Out of that 5 can be 6, but the last 2 remains the same. Paper organization is the last one, and the second last is paper contribution, where we have to outline to the best of our knowledge our paper, this model is the only thing that has discovered this, like so. We can also use no existing work have thoroughly covered dash dash dash, this present work covers this. Like this, we have to actually, the novelty of the work lies in the fact that this is another thing. मतलब रिव्यूअर को थोड़ा सा ये लगे कि आप जो कह रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंस. 2-3 lines I have in all the 3 papers that I have shared. You will find these lines. To the best of my knowledge, the novelty of the work lies in the fact that no existing work dash dash dash. So if these things start the paper contribution, it is a bit, you will get an edge over. Well, background, motivation, problem, research gap, and then we come to the contribution. So first paragraph जो आपका होगा introduction का, that will be completely history. Like in the recent past, Internet of Things has evolved like that. Okay. Then we slowly move on to the problems of IoT. दूसरे में we move on to the problems. Every problem will have some solution. Third is the solution. This is your motivation. Problem आपका motivation नहीं है. Don't try to understand. Problem is not your motivation. Problem of an area is not our motivation. Our motivation is problem was existing. हम किसी novel problem को solve नहीं कर रहे. So problem is existing. We'll outline the problem in the background itself. ठीक है? Background में हम IoT का evaluation नहीं दे रहे. We give the problem. Then motivation is what are the solutions that have been proposed and what are the problems in those solutions. हमें काम करने के लिए कौन मोटिवेट कर रहा है? कोई सॉल्यूशन जो कि परफेक्ट नहीं. So there are problem in that solution also. We call that as a problem. जो उन सॉल्यूशन के अंदर प्रॉब्लम है, हम यहाँ क्या करते हैं, IoT में ये दिक्कत है तो हमने IoT बता दिया, हमने दिक्कत बता दिया. नहीं, IoT में ये दिक्कत है, IoT और उसका दिक्कत बैकग्राउंड में आ गया. कुछ सॉल्यूशन आया, there was a problem in this solution, that problem I am talking about. And then we come for that problem is nothing but the research gap that you are going to solve, and then we move towards the methodology. तो 2 पैराग्राफ आप रखिए प्रॉब्लम के लिए. फर्स्ट हिस्ट्री एंड द प्रॉब्लम, सेकंड the proposed methodology and the problem in that, the what works have been published. दूसरे पैराग्राफ में आ जाएगा क्या काम हुआ और उसका क्या प्रॉब्लम. And third paragraph will become what is your actual method. तो पहले 2 पैराग्राफ में आप क्या कर रहे हैं ये नहीं बताने का. थर्ड पैराग्राफ में आप क्लियरली बताइए कि आप क्या कर रहे हैं. फोर्थ में आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, why you are doing this. Rather than why you are doing this, you should answer why your paper should be published. Why your paper deserves publication needs to be advocated in fourth. Then finally we go for the paper contribution. Paper organization. That is the remainder of the paper is organized as follows. Now before this, before moving on to literature review, let me open one paper. सर आपने पेपर शेयर किए हैं? शेयर नहीं किया मैम, मैं यहाँ just is it visible ना? देखिए, don't get into the technical details, just try to understand how it is being framed. The advances in hardware manufacturing technology and wireless communication has enabled evaluation of tiny multifunctional low power sensor node for wireless sensor network. मतलब पहला लाइन हमने दिया किसका? Evaluation. कैसे ये सारा चीज इवॉल्व हुआ, वायरलेस सेंसर नेटवर्क आया. दैट इज द फर्स्ट. देन
Second, sensor nodes located in sinks vicinity deplete their batteries quickly. मतलब ये problem है. Sensor node जो, how can I use this marker here? कुछ है? Can someone guide me? अलग ऑप्शन आता है. Enable editing करना सर. Okay, anyways, so sensor nodes located in sink vicinity deplete their batteries quickly. That is a problem. Then we give the reason. Because of concentrated data traffic near sink, leaving data reporting and so on so on. ठीक है? कि कुछ problem है, उसका reason दे दिया. ठीक? We given the history, we give the problem, we give the reason. Then, in order to mitigate this problem, अब इस problem को खत्म करने के लिए every statement is planned here. देखिएगा, समझिएगा ध्यान से. In order to mitigate this problem, इस problem को mitigate करने के लिए some mobile sinks are introduced and so on. मतलब कुछ solution दिया है. However, मतलब उस solution में भी कुछ problem है. However, advertising mobile sync position leads to energy wastage. ये problem है. ठीक? Then again, just see how many layers are there. We don't write it directly. There are layers. फिर हमने बोला इसमें जो problem था उसको solve करने के लिए mobile sync position like that. Then recently energy efficient distributed hierarchy have been proposed. Recently एक और solution आया है. Getting my point? That has been proposed aiming to mitigate this. Now we come in this present work. यही मैं कह रहा था, वो बीच का arrow है, 4 लाइन आगे 4 लाइन. In this present work, we propose a energy efficient ring routing protocol, which is enhancement of existing ring routing protocol. That considers. अब आपके जो proposed methodology है, उसने क्या consider किया, अब इस पे आया. हमने एक लाइन में history दिया, problem दिया. कुछ सॉल्यूशन होगा, उसका प्रॉब्लम दिया, फिर कुछ सॉल्यूशन होगा, उसमें भी हम प्रॉब्लम बता रहे हैं. Then it is layer, जैसे ओनियन लेयर होता है ना, उस तरीके से we are peeling off different layers and different solutions have been proposed. Then finally कि आपके पेपर ने क्या किया, that considers this एक लाइन में. Then finally the proposed protocol was simulated. Finally जो आपका proposed protocol है, that was simulated and you have that is related to the result and discussion section. मतलब जितने भी सेक्शन आपके पेपर में हैं, सबके लिए आपने एक एक लाइन दी. Getting my point? So that is how we structure an abstract. Then we come to introduction. ये line और first line is almost the same. Getting my point? Of the first line of the abstract and this is almost the same because this is nothing but the history. Then अब देखिए यहाँ पे आया the advertisement of sync is a major problem. ये यहाँ पे problem आ गया. This statement is nothing but कि कुछ problem था, उसका solution है, कुछ problem आया, फिर से उसका solution, the entire thing is listed. Finally we come to, in this paper, this is the paper contribution. In this paper, what is proposed energy है, देखिए, the main purpose, we give the main purpose of the work in one line. The proposed protocol employs what things, okay. Novelty of the proposed work lies in the fact that rechargeable sensor energy harvesting technology have not been incorporated in ring routing to the best of our knowledge. I actually say that what all things I am using that has not been novelty. Just this line is very good. Novelty of the work, proposed work lies in the fact that तुम कहो कि तुम्हारा काम नोवेल नहीं है, उससे पहले मैं लिख के दे रहा हूँ कि मेरा काम नोवेल है. Novelty lies that rechargeable sensor energy harvesting has not been incorporated in the ring routing to the best of our knowledge. Apart from this, one more novelty, if you say it is not much novel, take another line. Apart from this, we also consider enhancement of security. Major contributions is again listed as follows. तो एक पैराग्राफ में आप ये दीजिए कि आपका पेपर क्यों पब्लिकेशन डिजर्व करता है. Then in the second paragraph, you list the contributions, what your paper is contributing.
मतलब जो फोर्थ पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन का है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. वन, अ चंक दैट सेज व्हाई योर पेपर शुड बी पब्लिश्ड. अनदर, प्रेफरेबली बुलेट्स दैट सेज कि व्हाट योर पेपर इज एक्चुअली कंट्रीब्यूट. तो पहला वाला होगा एडवोकेटिंग, दूसरा है आपका टेक्निकल कंसर्न कि भाई ये चीज मैं आपको इस पेपर में बता रहा हूं. एंड फाइनली कम्स द पेपर ऑर्गेनाइज. तो रिव्यूअर, इट इज सपोज कि अगर कोई अच्छा एक्सपीरियंस रिव्यूअर है तो सबसे पहले ये वर्ड ढूंढता है पेपर में, एब्स्ट्रैक्ट में ढूंढता है इन दिस पेपर, और पेपर में ढूंढता है रिमाइंडर ऑफ द पेपर, इससे पहले पढ़ता है और इन दिस पेपर के बाद. In abstract, they study the paper after the word in this paper. In introduction, they study the paper before the remainder of it. So, these are the two areas that needs to be planned very, very appropriately. Then comes the literature. उसके बाद आता है literature review, और we call it as related work. अब देखिए, related work लिखने का तरीका क्या है? We actually, first of all, just see here, this we use this way. This is one of the way that I personally use. It is not, there is no written rule, but हम ऐसा use करते हैं. Second name of the first author. किसी का नाम होगा Alex Zhang. I use the second name of the first author, space et space al dot and the number. Then I have used. What you have to notice? You have to notice the tense. Tense is Zhang et al proposed dash dash dash. Kumon et al proposed dash. Emran et al proposed dash. Lin et al proposed dash. ये कुछ odd लग रहा है? कुछ problem लग रहा है? Yes. हर statement एक जैसा start. As I said, this paper is when I am currently also in a learning phase. उस समय ये मुझे पता नहीं. Better way to write down this is कि एक लाइन तो ऐसे लिख दिया, Zhang et al propose this, ये propose this, ये क्या है? सब propose लिख के हमने मिला दिया. Better way to write is Zhang et al propose this done in another work, comma, Kuon et al proposed this. Third line, similarly, comma, Imran et al proposed or presented. अब ये proposed को भी हमेशा propose मत करिए. Coined, outlined, presented, surveyed, reviewed, whatever it is. तो इस तरीके से tense हमारा ed वाला. Okay, so this is how we can write. और continuity बनाने के लिए दो word मैं use करता हूँ. In another work, comma. Similarly, comma. अगर 15 पेपर आपको literature review में approximately 10 to 15 papers you have to write. अगर ये 15 पेपर, ठीक है, आप इसको लिखना है आपको 2 लाइन मैक्सिमम. लिटरेचर रिव्यू इज नॉट मोर देन 30 लाइन्स. 25 से 30 लाइन, 2 लाइन्स पर पेपर. अब ये 2 लाइन्स आप लिखेंगे कहाँ से? दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट. देखिए, हम कहते तो हैं अपने स्कॉलर्स को कि 50 पेपर पढ़ लो, 40 पेपर पढ़ लो लिटरेचर रिव्यू. पागल हो जाएगा. He'll go mad. Frankly speaking, we all have done our work during our time. Some are doing, some have already done. Have you studied more than 10 papers? It is not. 8 से 10 पेपर से ज़्यादा हम नहीं पढ़ते. पढ़ना मतलब studying each and everything. But we must have read the abstract of 30-40 books. 30-40 abstract हमने जरूर पढ़ा होगा. ठीक है, तो लिटरेचर सर्वे और रिलेटेड वर्क लिखने के लिए I preferably say read the abstract of 20 odd papers from your area. Write 2 lines from them. How will you get that 2 lines? Directly focus on the abstract. Go to the in this paper. वहाँ से 2 लाइन. दिमाग ज़्यादा नहीं. इन दिस पेपर पे जाइए, किसी भी पेपर के इन दिस पेपर वाले सेक्शन पे जाइए, वहाँ 2 लाइन जो लिखा है वही उसका कंट्रीब्यूशन है. रीफ्रेम एंड राइट इट. 2 lines per paper, that's more than enough for the related work. Now, table बनाना चाहिए या what mistake we do here? Table, as ma'am said, 110% table makes the thing looks good. You must make a table for related work. Now, I said table makes the thing good. Getting my point? Table बस अच्छा दिखाता है. Mandatory क्या है ये समझिएगा.
every related work section for before starting this हम एक thesis लिखते हैं, बच्चे हमारे thesis लिखते हैं, बीटेक प्रोजेक्ट thesis, BCA प्रोजेक्ट thesis जो भी लिखता है, उसमें हर चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन रहता है और हर चैप्टर का कंक्लूजन भी रहता है. हमारे लिटरेचर रिव्यू में भी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होना चाहिए. That is what most of us are missing. We write ATAL, ये तो ठीक है, ये तो बहुत सही है, very good. But what we are doing? Before this also we have to write something that will be the introduction, and after this also we have to write something that will be the conclusion of every section. So ये जो after that वाला चीज है conclusion, either you present it in the form of a table, it will look good, or you write it in a paragraph. लेकिन conclude आपके related work को करना है. For example here we will see that related work how it is started. In recent years, several research works have addressed numerous issues that indirectly influence our investigation. Few of the most relevant works among them are highlighted in this section, covering subjects related to 3 things: hierarchical sync routing protocol, load balance routing, energy harvesting. 3 चीज अपने related work को 3 अलग-अलग पार्ट में डिवाइड करें. If your related work is big, divide it into 2-3 parts. Why do you want to give everything under one heading? हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2.1, 2.2, 2.3. वेरी इंटरेस्टिंगली 2.1 का भी कुछ हिस्ट्री होगा. There will be some introduction to 2.1. अब आप देखेंगे every section, every subsection according to me, सही है कि गलत है I don't know, according to me every section, every subsection is an independent entity. तो इसका भी कुछ इंट्रोडक्शन होगा. Many routing protocols have been proposed in order to overcome that, and so on. We have written it, and then we have finally gone to ATAL. Then this is 2.1 done. Then it is 2.2 again. In order to observe the battery power, again I have given an introduction to 2.1. Okay. Then 2.2, 2.3 and so on. This is a table that summarizes. देखिएगा. टेबल का मतलब क्या है? Everything must have some meaning, isn't it? आपको एक connecting link बनाना है. For example, if you closely analyze this, पहला प्रोटोकॉल था TTDD. Not going into the details, but there is some demerit listed here. ठीक है? हर किसी का मेरिट हम सब कहते हैं सर टेबल में क्या सबका कंट्रीब्यूशन लिख दीजिए, सबका लिमिटेशन लिख दीजिए. ऐसे नहीं. आपने जिसका डिमेरिट लिखा, अगला एंट्री उस कॉलम में उसका मेरिट होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूटी. फॉर एग्जाम्पल TTDD में लिखा गया है the overhead involved is very high, तो TTDD involves high overhead. तो GBER eliminates this. Getting my point? इसका डिमेरिट था high overhead, तो इसने इसको eliminate किया. इसका डिमेरिट है faces hot spot. This will, somehow solve this hot spot problem, and so on. This is how connectivity needs to be maintained in literature. हम क्या करते हैं? 20 पेपर ले लिया उस एरिया का, नहीं. वो 20 पेपर कनेक्टेड होना चाहिए. किसी का मेरिट दूसरे का डिमेरिट होना चाहिए. If you are working in terms of accuracy, तो भाई accuracy tapering ends में होने चाहिए. किसी पहले का 99 है दूसरे का 94 आप साइड नहीं कर सकते. और 99 वाले को लीजिए नहीं, उससे दूर रहिए. या तो वो फैब्रिकेट किया होगा या तो आपको फैब्रिकेट करवा देगा. So yeah, that is a problem. So that is about the literature review. Sir, can you put literature review in the form of table also, like? Completely table? Not at all. Not preferable. Completely table नहीं रहेगा क्योंकि table is not a part of a paper. If you submit to certain journals, they will ask you to remove the table and the figures and then submit. Figures and tables, according to me, is not a part of a paper. It is only a supplement. तो टेबल जो है हम लिखते कैसे? टेबल सपोज करिए हमने बुक्स देखा है. We should not, we have to focus on the basics. जो बेसिक किताब है उसमें क्या लिखा रहता है? Figure 2 depicts the architecture of this. The above listed protocols have been summarized in table 2. इसे कहते हैं हम giving the table a citation. और टेबल के ऊपर जो लिखते हैं we call it as giving the caption to a table.
Every figure and table needs to be provided a correct caption and must be cited in text. ये चीज written में rule है. Every table and figure must be cited in text and must be given caption. ये written rule है. तो text में आप cite कहाँ करेंगे अगर आप text रखेंगे? So it is mandatory to write in text. Then only we can summarize it. So what we can do is like हर स्टडी का क्या कंक्लूजन था, क्या फाइंडिंग थी, वो हमें टेबलर फॉर्म में डाल दिया और ये बता दिया कि ये स्टडी इम्पैक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई, इस तरह की ये स्टडीज है. साइट आपको एटलीस्ट एक लाइन को करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इट विल लुक ऑड. ठीक है. क्योंकि मैं भी पहली बार ही इसको टेबलर वे में रखने की सोच रही थी. ऐसा मैंने मेरे भी स्टडी को तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. मैं मेरे हिसाब से ये सब फैंसी वर्ड्स हैं. आजकल मैंने देखा है लोग बना रहे हैं टेबल. क्योंकि उसमें भी मैं आपको बताऊं, you did your PhD from where, madam? You were PhD from where? Okay, how many papers you have reviewed when you were a PhD scholar? हाँ, आपने रिव्यू किया होगा ना, आपके गाइड दिए होंगे रिव्यू करने, कुछ पेपर देते थे? PhD thesis for review. बहुत सारे गाइड ऐसे हैं जो आपने सुना भी होगा कि अपने स्कॉलर को दे देते हैं रिव्यू करने के लिए, है ना? 99% of the guides actually submit the same review that you give. आपने जिस थीसिस को रिव्यू किया, क्या आपके गाइड उस थीसिस को फिर से पढ़ के आपके कमेंट्स को मॉडिफाई किए? थोड़ा बहुत कर दिया होगा, बट दे जनरली रिलाई, आपका जो फर्स्ट ओपिनियन होगा वही उनका भी लास्ट ओपिनियन है. सो आवर पेपर्स आर बेसिकली नॉट रिव्यूड बाय एक्सपीरियंस, बिकॉज दैट इज ट्रू. सब गाइड अपने स्कॉलर को देता है कि भाई तुम जरा रिव्यू करके दो, वो अगर कह दिया सर ये पेपर अच्छा है तो हम उसी नज़र से उसे देखेंगे. कह दिया सर इस पेपर में कुछ नहीं, रिजेक्ट का 5 कमेंट दे जल्दी. दैट इज व्हाट वी आर डूइंग. दिस इज ट्रू. सो या दिस वर्क्स इन दैट वे. इंपॉर्टेंट थिंग इज वेयर डू वी फाइंड पेपर्स फ्रॉम, वेयर डू वी गैदर मटेरियल्स फ्रॉम. मटेरियल कहाँ गैदर करते हैं? बहुत जगह करते हैं. गूगल स्कॉलर इज ऑल्सो वन वे, बट इट इज द लीस्ट प्रिफरेबल एंड द वर्स्ट प्लेस टू फाइंड अ पेपर एसेस. एम आई ट्रू? लेकिन गूगल स्कॉलर का भी एक चीज है जो आपको मानना पड़ेगा. इट गिव्स यू टू रिजल्ट इन टू मैनर. आइदर इट गिव्स यू अ रिजल्ट प्रोफाइल वाइज और इट गिव्स यू अ रिजल्ट आर्टिकल वाइज. हम क्या करते हैं? हम करते हैं so Google Scholar actually gives us article wise also, profile wise results. Why we need to search Google Scholar is आपके एरिया में profile wise who are the best scientists across the globe who are working in your area. We must know at least 8 to 10 names who are working in our area. उनका क्या है कि उनकी क्यों, वो क्या काम कर रहे हैं इस एरिया में, what are the publications that are being done in their labs. आपको उसका आइडिया रहना चाहिए. अपना आप रिसर्च कर रहे हैं, अंधाधुंध रिसर्च कर रहे हैं, that is a different thing. You also must know who are the people who are working in your area, you know, and what are the achievements at their end. किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, क्या है नहीं है, इस चीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए. Google Scholar is the area where you can you know find such profiles. तो 8-10 लोग जानने चाहिए आपको आपके एरिया. Mistakes, for example, what papers you should consider. सारे papers recent होने चाहिए. Related work, literature review में papers कब के होने चाहिए? Recent या old या क्या? Last 20 years. Mix होने चाहिए. कैसे mix करेंगे इसे? Exactly, 100% true as per your experience, madam, and this is 100% true. कि 20 साल तो थोड़ा ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से, बट 7 to 10 years मिनिमम आपको पीछे जाना चाहिए. अब कहेंगे कि सर रिसेंट रेफरेंसेस साइट करने चाहिए. यस, यू शुड साइट. इफ यू आर साइटिंग 20 रेफरेंसेस, बेस्ट वे इज साइट 4 from 25. आज 26 में है, 4 25 से लीजिए, 2-4 आप 26 से ले लीजिए,
3 23 से लीजिए, 2 22 21 20 से लीजिए, 1 19 18 से लीजिए, 10 साल आप चले जाइए। Why this is so? Why this is so? मतलब लास्ट 2 ईयर से 4 ले लीजिए, उसके बाद 2 ईयर से आप 3 ले लीजिए, फिर 2 ईयर से आप 2 ले लीजिए, फिर 2 ईयर से आप 1 ले लीजिए। It will be 20, 4 2 7 2 9 10 20, 8 years में you will be having 20 references approximately. Then another important thing is do not take papers of conferences. Conference के paper is said कि it is of low quality. Of course it is of low quality because IEEE and Springer has no such standard nowadays. एक समय था आज से 12 साल 15 जब आपने मैम डाला होगा IEEE में पेपर एक्सेप्ट होता नहीं। आज की डेट में बच्चे आज डाल रहे कल दे रहा है कि सर 6000 you have to submit. तो yes, this is a problem. So कॉन्फ्रेंसेस के पेपर आपको नहीं साइड करने चाहिए और पिछले 8-10 साल का पेपर इसलिए साइड करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम एकाएक नहीं टपका है। द प्रॉब्लम हैज नॉट इमर्ज्ड ओवरनाइट, द प्रॉब्लम विल हैव सम कनेक्ट्स। 6-7 साल पीछे हम बस इसलिए जा रहे हैं टू एस्टैब्लिश सम कनेक्ट्स। कहेंगे लास्ट 2 इयर्स का क्या मीनिंग है? लास्ट 2 इयर्स के पेपर से आप कंपैरिजन करिए अपने रिजल्ट, कंपेयर योर रिजल्ट विद द लास्ट 2 इयर्स पेपर इन लिटरेचर रिव्यू साइट फॉर एटलीस्ट 6-7 इयर्स। तो कनेक्टिविटी आपका मेंटेन है। सो दैट इज वन थिंग. Recent papers which are site, you should not go for conference papers, go for good quality journal articles. Then excessive self citation होना ही नहीं चाहिए, excessive वगैरह तो बात की बात, self citation मत करिए, that is totally bad, very bad. I have 10,000 citations approximately. I never did self citation. उस 10,000 में से किया होगा, स्टार्टिंग में किया होगा, जब 100-200 जब पहुंचते हैं ना लोग, तो उस समय रहता है, आप समझिए, when you are 200 ना, you can cite 50 and go to 250 and then you can post on a Facebook. 450 पे है, 50 और करके 500 पहुंच के लिंक्डइन पे डाल देंगे, reach to 500 citations a milestone. But when you reach to 3,000 4,000, these things will not matter. कर ही नहीं पाएंगे, लाइफ में कितना पेपर लिख पाओगे? 100, बहुत ज़्यादा लिख लिया 200, बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन है 500 पेपर में कितना साइड कर 4 बार मैक्सिमम, वो भी दिख जाएगा। 500 into 4 हुआ 2000. You cannot reach 10,000 20,000 or good number by self citation. तो जब पहुंचेंगे नहीं तो करना क्यों है? So it should be totally prohibited, 100%. Another thing, रेफरेंस हम लेते कहाँ से? रेफरेंस हम लेते कहाँ से ये समझिए। 90% of the cases we write a paper, we take 4-5 papers, 5-6 पेपर लेते हैं, कुछ इधर से कंटेंट लिया, कुछ इधर से लिया, and we rephrase it, and that is also not completely unethical. फंसते कहाँ है आप इस चीज को समझिए। 4 पेपर लिया, उससे एक पैराग्राफ आपने कहीं से सपोज करो एक पैराग्राफ लिया, उस पैराग्राफ में 2 साइटेशन, आपने जब उस पैराग्राफ को रिफ्रेश किया, आप भी वहां पे साइटेशन डालेंगे, 2 साइटेशन आपने भी वहां डाला। Getting my point? What you will do? You will go and copy the citations from there. That's what we do. Existing paper से ही copy citation copy करेंगे। इस तरीके से आप कर क्या रहे हैं? आप अपने source को reveal कर रहे हैं। You are actually revealing your source somehow. Suppose I make a paper of 40 references. I had taken help from 4 different papers. 10 references I have taken from all these 4. Journal has reference checking result now. They have reference matching standards now. आपने पेपर सबमिट किया 40 रेफरेंस के साथ, रेफरेंस चेकिंग में दिखा रहा है 10 इस पेपर से, 10 इससे है, 6 इससे, 7 इससे है, चारों पेपर डाउनलोड करेगा, ये लो भाई इन चारों का एग्रीगेशन है, रिजेक्ट। गेटिंग माय पॉइंट? अगर हम कहीं से चोरी करते तो बताते नहीं हमने कहाँ से किया है। Getting my point? And if you are citing reference from the same paper, somehow you are disclosing from where you have taken the content. This is one thing that unknowingly we do this as a mistake. हमें पता नहीं होता है, इसके पीछे भी साइंस है। देखिए कई सारी चीजें आज के टॉक में ऐसा हुआ होगा कि शायद हम कर रहे हैं, हमें लगता है कि किसी को पता नहीं चल रहा, but somehow it is getting noticed.
सॉल्यूशन फॉर दिस इज, फॉर एग्जांपल अगर एक लाइन दिया हुआ है, ठीक, सॉल्यूशन एक पेपर है, सपोज करिए IoT एक डोमेन है, तो IoT में लिखा हुआ है इंटरनेट ऑफ थिंग्स इवॉल्व, ये वो, वहाँ पे 1 नंबर साइटेशन दिया हुआ है. यू राइट दैट लाइन, क्या IoT के बारे में वही एक पेपर दिया हुआ है? ये तो हजारों पेपर है, गूगल से सर्च करो, एक पेपर आप डाल दो पिछले 2 साल का, then only you will be able to manage that year, that reference and all, कि जर्नल से कितने होने चाहिए, जिस जर्नल में साइट सबमिट कर रहे हैं 4-5 उसके कर दीजिए, 2-4 उस गरीब एडिटर इन चीफ के कर दीजिए. तो yes, that is how things actually work. Okay, so yeah, novelty, importance of novelty, as said, we have already seen कि novelty needs to be advocated. आपका काम जो है सो methodology based, कि भाई we are using new methodology, new framework, new architecture, new theoretical contribution. If you do all these, you will become Newton, you will become Einstein. Getting my point? We cannot do all these things. We cannot every time keep novel methodology, novel framework. होता क्या है? We have the existing framework. We somehow tweak. And देखिए, चोरी नहीं कर. We are somehow tweaking and we are getting our own result, our own implementation. But बोलना ऐसा है कि भाई मैं ही बनाया हूँ इसको. That is important. Advocating that this is novel, that is very very important. So yeah, that is the importance of novelty. New data set only or slight parameter tuning, minor modification of existing work. Cross लिखा हुआ है लेकिन करते यही है, कर भी यही सकते हैं. What can we do? So yeah. Identification of research gap. Of course, this is a problem. How do we identify a research gap? कि आपको अच्छे से एक्सप्लोर करना है. Why do we read papers in literature review? Just to know कि इस तरह का काम. अब ऐसा हर चीज़ तो नहीं लिख देंगे ना, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ऐसे नहीं लिख देंगे हर चीज़ को. उसके पीछे कुछ तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए. सो वी हैव टू एक्सप्लोर इट प्रॉपरली एंड देन we have to finalize the research gap. Research gap needs to be finalized in survey paper also and in research paper also. I also have a few survey papers today. I'll showcase it. See, my expertise is more in survey paper. If you see my profile, you will see that I am more expert in survey paper. I have good number of survey papers with BTech students. 80-page paper have been published with only 2 authors in regular issue. So I am more experienced in this survey paper. I will show you how to outline a research gap in survey. ये अभी हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे सर्वे पेपर में रिसर्च गैप आउटलाइन करते हैं. Strong methodology building is of course important. I am not going to comment much on this because it is your area. अब मैथमेटिक्स वालों को हम कैसे बताएं कि आप कैसे मेथोडोलॉजी आप बिल्ड करेंगे? हम आपके इक्वेशंस चुरा के जी रहे हैं. We computer science, we are using the equations of mathematics. Okay, so yeah, mathematical models include करिए, algorithms and flowchart include करिए. One thing, ChatGPT का मैंने बोला AI is dangerous. I said AI is dangerous, but we generally use AI. For example, have you heard of denial of service attack? Have you heard of denial of service attack? DOS attack. That is one prevalent attack in this computer networks. So if I ask you, write something about denial of service attack in one paragraph or whatever it is. Write 1 page about denial of service attack. You can use ChatGPT. Write it down, please. 1 page about denial of service. Don't see the code, please. Don't see the code, please. आप बोर्ड मत देखिए,
तू सर्च किया, मैंने भी सर्च किया. Getting my point? Try to understand. कितना अच्छा भी है यार, ऐसा नहीं है कि ChatGPT is not good. ये कितना बेहतरीन एल्गोरिथम दिया है. Just have a look at this. ये हमारा तो नहीं दिया। हैं? आपका प्रॉब्लम एल्गोरिथम ये देखिए, this is the algorithm. DOS mathematical model. Compute this, if else, compute return and. Getting my point? You have written. आपने क्या सर्च किया? एक पैराग्राफ. That is a chunk. Just imagine, आपका वो ज़्यादा better और influential होगा आपके पेपर में, और if you rephrase this and use it in your paper, that becomes clear. सर इसको एज इट इज कॉपी कर देना थोड़ा नहीं, खेल जाता ऐसा नहीं करना है. मैं आपको ये भी बताता हूँ. यार एक तो कैमरास करा रहे हो बार-बार. Okay. सर हम ऑन कैमरा भी बात कर रहे हैं. चलिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है लेजिटिमेट रिक्वेस्ट रेट. वर्ड होगा ना मैम इसमें? देखते जाइएगा वो क्या रहा है. Algorithm 1 is lambda L legitimate request rate. How do we denote rate? Request rate legitimate lambda L. Attack request rate and server rate. Service rate. लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है सर? आप एक काम करो ना, आप जो भी रिकॉर्डिंग है उसको शाम को टाइम डालो, फिर ड्राइव करो, वीडियो की ये एक्चुअली ये बैक बटन चल नहीं रहा है. Suppose I remove this. Rec, that is request legitimate, is denoted by RL. Rec, that is attack, denoted by RE. And somehow what we are doing, ये चल नहीं रहा है अपना बैक स्पेस. Legitimate.
just see. Now I have written the same thing almost, है ना? देखिए लैम्डा लेजिटिमेट रिक्वेस्ट रेट, देखो सेम चीज है ना, REQ लेजिटिमेट RL कर दिया, अटैक रिक्वेस्ट रेट REQ अटैक कर दिया, कहीं कोई मतलब नहीं है कि ये फ्लैग में आ ही नहीं सकता, कतई नहीं आएगा, इट विल नेवर कम इन फ्लैग. एंड फॉर द इंटायर स्पेस वेरेवर इट इज रिटन, देखिए लैम्डा L प्लस लैम्डा A, I will write RL plus RA. Getting my point? So it will never come in flag. So this is how we can paraphrase. So ChatGPT also gives us good results. तो आप अगर मैथमेटिकल लिखना है तो this can be an option. I'll tell you, I have made a 80 attack. I am basically from security background. 80 different attacks का ChatGPT से दुनिया में किसी बुक में ना हो, I don't care. ये आपको निकाल के दे देगा. कोई भी अटैक जिसके बारे में एक लाइन लिखा हुआ हो, इसको कहिए, अब ये इतना सुंदर, अभी इसको कहेंगे 20 लाइन में एल्गोरिथम, तो 20 लाइन में देगा. हम कहेंगे फॉर इफ एल्स के लूप में दीजिए, ये उसमें भी देगा. व्हाटएवर यू से इट विल गिव इट टू यू. दैट इज द पावर ऑफ एआई एंड दिस इज हाउ वी हैव टू यूज एआई. सर आजकल का टाइम पहले फ्लैग आता था, अब एआई आता है. फ्लैग आता है 2% और एआई आता है. मैं आपको सच्चाई बताऊं मैम, कितना भी आप कह लेंगे कि आपने एआई यूज नहीं किया, मैं मानूंगा नहीं. आई विल नॉट एट ऑल entertain और क्या कहते हैं उसे, believe कि you have not used AI tool. And I say I have personally never used any paraphraser till date. Personally typed more than 10 lakh words in Word. और अभी भी जो रेफरेंसेज हम 300 रेफरेंस डाल देते हैं बिना मेंटली सीखे, मैं वर्ड में 300 रेफरेंस डाल देता हूँ. तो यस, मैं आपको कहूँगा, अगर कोई कहता है कि सर एआई टूल यूज नहीं किया लेकिन एआई आ गया, इट इज नॉट. हम कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, हमें पता है ये प्लेगिज्म आ कैसे. इट इज कमिंग बिकॉज सम चंक इज पेस्टेड समवेयर. You write something, you give it to correct the grammar. समझिएगा बात को, आपने कुछ लिखा, आपने ग्रामर करेक्ट करने के लिए दिया. Getting my point? This is very very sad thing of AI. I am from ICSC background. मैं अपना पर्सनल बात करता हूँ. मैं ICSC बैकग्राउंड से 10th किया. ICSC is supposed to be good English. ICSC students have good English. आज भी बचपन से मुझे पता था कि मुझे इंग्लिश अच्छी आती है. I used to be fluent. अब गलत एक आध तो ग्रामेटिकल एरर सबका होता है, but I used to be fluent and while writing also in essays and all also I was scoring good in my school days. I have lost my confidence in the last 2 years. कोई भी एक मेल लिखते हैं, for that matter आपकी भी FDP को जो मैंने किया होगा रेस्पॉन्ड, तो एक मेल लिखा हमने, चैट जीपीटी को दिया, लिख दिया नीचे रिफाइन. बहुत बेइज्जती बेशर्मी की बात है कि you were good in English in your school days, you are from ICSC background, मम्मी घर में खाना नहीं देती थी अगर इंग्लिश में नहीं मांगा तो. आज हम एक लाइन लिख के चैट जीपीटी कह रहे हैं रिफाइन. तो इट इज डिटोरिएटिंग एवरीथिंग नाउ. तो हम यही कर रहे हैं, हमने कुछ लिखा, वी हैव पैराफ्रेज्ड इट मे बी ऑन आवर ओन एंड देन अगेन वी गिव इट टू करेक्ट इंग्लिश. वो फिर आ जाएगा पूरा उठ के आई. एआई तभी आएगा जब वो चंक कहीं पेस्ट होगा. Getting my point? If it is in your laptop, in your word file, it will never come. दूसरा एक ही ऑप्शन बचता है, टर्निटिन में आप चेक करिए एंड यू फॉरगेट क्लिकिंग ऑन रिमूव रिपोजिटरी. अदर देन दैट आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर ऑप्शन. ये चीज फिर आना नहीं चाहिए. आ रहा है तो वी डेफिनेटली नीड रिसर्च इन दिस एरिया. So yes, for comparison, as I said, we should have certain metrics for comparison, and we should compare with the last 2 years publication itself, that is published in 3 to 5. लेकिन 2 साल का आप लेके चलिए, both statistical and classical comparison. Then comes the result and discussion part. Very important. I'll tell you straight. Suppose करिए एक methodology है A. A outperforms B. Case 1. Second, case 2.
A outperforms B by 13%. पहला है A outperforms B, second is A outperforms B by 13%, third is A outperforms B by 13% because A has employed this methodology. Further, B has used this which leads to this particular problem that has been addressed by A. That is what needs to be written in this exercise. Not only you have outperformed, not only by what margin you have outperformed, also by the reason why you have outperformed and including what that person has missed at that point. Resultant is very important कि आपको बताना पड़ेगा. हम करते क्या है सर, ग्राफ जनरेट हो गया. अरे ग्राफ जनरेट होने से काम नहीं चलेगा. You have to write the reason behind that graph. I'll tell you that I think it will start is good to go or please. देखिए, in this I'll just give you an idea कि हम लोग कई बार क्या करते हैं, किसी चीज से कंपेयर करते हैं. Okay, we have compared with three things. In this I have compared, just we explored these that employees mobile SIM. तीन चीजों से कंपेयर किया है, LVDT, railroad, ring road, which are chosen for comparative analysis with the proposed protocol. Just try to understand. आपको इसकी डिटेल में नहीं जाना. हमने तीन चीज लिया है, नाम है खाली याद रखिएगा, LVDT, railroad and ring road. And I have compared my protocol with this. आगे देखिए. In existing determinism protocol, first I have explained LVDT. ठीक है, बहुत importantly ये at the end I have mentioned why LVDT. So before the reviewer asks you why you have chosen this, I have answered your question beforehand. कि LVDT क्यों choose किया, वो ये रहा भाई. Then second is railroad. देखिए, railroad I have explained this railroad, Welland road. Why I have chosen railroad? Why railroad? I have compared. Railroad बता दिया क्या है, उसके बाद हमने उसका रीजन दिया. Railroad क्यों choose? Whatever you are doing, you must have some reason. You have compared it with three things. Why only three? There are number of papers, published in this area. Why you have chosen? Do not give the reviewer the freedom to ask these questions. नहीं तो क्या होगा, वो किसी दिन आपको ऐसे चीज से कंपेयर करने कह देगा that is practically not possible. For example, he might say, don't compare with railroad, compare with this. How will I implement that? Again, it will be a problem. 6 महीने बाद तो तुम भाई हमें कमेंट दिए हो, फिर कह रहे हो इससे इम्प्लीमेंट करके दो. 6 महीने बाद हम जब इम्प्लीमेंट करके देंगे, पता चला तुमने उसको फीडबैक ही नहीं दिया, पेपर खराब हो जाएगा. These are the problems that we have to face. तो इनसे शायद हम बच सकें. So we have to advocate all these things. I was talking about result and discussion section, isn't it? अच्छा देखिए, मैथमेटिक्स क्या है जरा सा ये देखते हैं. ये क्या है? How people from mathematics background, क्या कहते हैं उसको, उंगलियों पे नचा रहे हैं लोगों को दिखा रहा है. You can see this statement. You can see this statement. BI capacity is greater than. Just understand three things. तीन चीजें. बस आप समझिएगा कैसे हम किसी भी चीज को किस तरीके से सामने वाले को हम बेवकूफ बना सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं बनाने. We have BI initial. ये कोई इसमें टेक्निकल नहीं है, नॉर्मल चीज है. BI initial. BI capacity. B मतलब बैटरी. Okay? B is the battery here. That can be normal remote battery, TV battery, whatever. BI, I मतलब initial. BI means initial energy content of a node I. I एक node है. उसमें कोई बैटरी है.
बी इनिशियल उस बैटरी का इनिशियल कैपेसिटी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। बी आई कैपेसिटी, तो आई क्या है हमारा लोड है, बी उस लोड का बैटरी होगा, कैपेसिटी उसका ओवरऑल मैक्सिमम कैपेसिटी, ठीक है। तो बैटरी कैपेसिटी ऑफ लोड है, तो एक लोड है उसका टोटल बैटरी कैपेसिटी इज बी आई कैपेसिटी, और इनिशियल बैटरी स्टेटस आपका जो मोबाइल है अभी उसका टोटल कैपेसिटी इज 100, ठीक है, टोटल कैपेसिटी इज 100, अभी वो 40% चार्ज, तो 40 इज योर बी आई इनिशियल, 100 इज योर बी आई कैपेसिटी। देन रो आई टी, लेट दैट बैटरी बी सोलर हार्वेस्टिंग, सपोज करिए वो बैटरी हमारा सोलर हार्वेस्टिंग, तो रो आई टी इज एनर्जी हार्वेस्टेड, टी मतलब टाइम स्लॉट, एनर्जी हार्वेस्टेड एट टाइम स्लॉट टी बाय सेंसर आई, बस ये चार ही बताएंगे, डोंट गेट गो, पहला 4 लाइन पे ही दिखाएंगे आपको, है ना। देखिए रो आई टी इज एनर्जी हार्वेस्टेड, एक सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग बैटरी है, तो रो आई टी सेज अमाउंट ऑफ एनर्जी हार्वेस्टेड ड्यूरिंग टी बाय सेंसर आई, and PIT is everything will also harvest energy and at the same time it will consume energy. So PIT is energy consumed by sensor I at time slot T. चार चीज, पहला इनिशियल एनर्जी कंटेंट, दूसरा जो मैक्सिमम कैपेसिटी हो सकता है, और वो रिचार्जेबल है तो कितना एनर्जी वो हार्वेस्ट कर रहा है और कितना एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक। देखते हैं कैसे इस चीज को मैथमेटिकली लिखा गया, जस्ट ट्राई टू हैव अ लुक। ये हमें देख के लग रहा होगा दिस वी आर एबल टू सी दिस, अब आप देखेंगे कि ये कितना बड़ा बकवास है, जस्ट ट्राई, देख के लग रहा है ना कुछ मैथमेटिकल है, कुछ टेक्निकल होगा, बहुत ज्यादा है ना, इजंट इट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इज रियली नथिंग। Denoting battery capacity of ith sensor node by BI, its capacity is assumed to be large enough. Battery capacity is assumed to be large enough to store all the harvested energy. ठीक है, बैटरी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, so that it stores all the energy. इस लाइन का मीनिंग क्या है? BI capacity मतलब total capacity of a battery can not be more than initial capacity plus rho IT was energy harvested from time 1 to time t. ये मतलब क्या है? आपके मोबाइल में जो 40% बैटरी है, that 40 is 40 is BI initial plus 60 is what you have harvested. Of course it cannot be more than 100. Of course अगर आप समझ रहे हैं तो टोटल कैपेसिटी से ज्यादा कैसे हो जाएगा हार्वेस्टेड प्लस कंज्यूम, getting my point? That is what is written. Then energy content of a battery at time slot t plus 1, देखिए at time slot t plus 1 can be estimated by bi t plus 1, कि अभी जो कंटेंट है और अगले क्षण में क्या कंटेंट होगा, that is bi t plus 1. तो अभी जो है आपके मोबाइल में आपने चार्ज में लगाया, अभी कुछ कंटेंट होगा, that will of course be less than after some time bi t plus 1, जो कंटेंट आपका at time t plus 1 है, that is equal to what, bi t जो टाइम t पे था प्लस रो आई टी जो आपने चार्ज किया, माइनस चार्ज करके अगर आप गेम खेल रहे हैं तो जो आपका कंज्यूम हुआ, that is again. दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग. तो हम किसी भी चीज को मैथमेटिकली लिख सकते हैं. इट इज आवर मैथमेटिक्स इज डिपेंड्स ऑन आवर फ्रीडम, कैसे हम इसको लिखना चाहते हैं. Then I was basically saying about result and discussion section. I'll just tell you. Take it. Immaterial of the figure. This result and discussion section should be self-explanatory. Figure 5 shows the variation of energy consumption with varying sync speed. LVDT shows maximum energy consumption followed by railroad and ring routing. That is one part. In case of LVDT, this results in increased energy consumption. This alleviates the overall network energy consumption.
number of broadcast and all the position information. Due to this reason railroad shows improved performance than LVDT. मैंने railroad और LVDT दोनों से कंपेयर किया. LVDT का worst performance. पहले हमने रीजन दिया LVDT क्यों कम परफॉर्म कर रहा है, railroad क्यों उससे ज़्यादा कर रहा है. And finally, the proposed E2SR2 incurs minimum consumption because of this. एक लाइन यहाँ लिखना था कि जो हमारा proposed है it outperforms these two things. We have 3-4 lines. Proposed क्यों अच्छा है, जो existing है उसमें भी तो कुछ comparison होगा, उसमें भी कोई अच्छा कोई खराब होगा, उसका reason दीजिए. And so also result and discussion section needs to be written in elaborate. हाई क्वालिटी फिगर्स एंड टेबल्स. ऑफ कोर्स टेबल का तो हाई क्वालिटी कुछ नहीं होता है, बट फिगर्स शुड और ऑफ कोर्स बी ऑफ हाई क्वालिटी. हाई क्वालिटी फिगर मतलब क्या हुआ, फोन्ट्स जो है आपके फिगर में देखिएगा, ब्लरी फिगर्स वी डोंट सबमिट विद ब्लरी फिगर्स. पुअर लेबलिंग इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंट आपका टाइनी फोन. फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग दिस स्क्रीन. आई एम नॉट, इफ यू क्लोजली एनालाइज, आई एम नॉट इवन utilizing 1% of the screen also. पूरे स्क्रीन का 1% भी मैं यूज नहीं कर रहा. In this case, I could have increased this phone. ये एक PPT है, आपको दिख रहा है. अगर ये पेपर का फिगर होता, it would have been very very small. These phones. तो फिगर का font जो है सो उसमें ज़्यादा blank space मत. Do not leave much blank spaces within the figure. Suppose करिए आप चार यहाँ पे, if you have 4 circles and you want to make a connecting link 1980, 2000, 2020, 2040. तो 1980 जहाँ लिखा उसके नीचे अगर आप कुछ लिख रहे हैं कि 1980 में ये था, तो एटलीस्ट वहाँ पे जगह होना चाहिए कि आप वहाँ लिख. नहीं है जगह, छोड़. Don't write. You can use A, B, C, D and below that explain what is A, what is B, what is C, what is D. So yeah. High quality figures of course important. Creating references. Now as I said, creating references, if you are using Mendeley, good. There are different other reference managing tools, you can use them. एक चीज ये है कि why do we use such tool? Because that helps you to maintain uniform type of references. आप किसी भी पेपर को एक बार ओपन करिए, ओपन any paper. कोई भी पेपर एक ओपन करिए, कॉपी द DOI ऑफ एनी पेपर, कॉपी द DOI ऑफ एनी पेपर. मेरा वाला ओपन है, उसी को कॉपी कर लीजिए, है ना, या कुछ एनी पेपर यूज करना, उसका DOI लीजिए, कोई भी पेपर ले लीजिए. सर ये लीजिए सामने का, copy the DOI of any paper, open any citationmachine.net in Google. Citationmachine.net. अब इसमें जो है so you will find n number of things like which citation you want. For example, if you want in AP, Google is for Google. Citationmachine.net in Google. Open citationmachine.net. यहाँ पे आप क्लिक ऑन जर्नल, किसी के आपने जर्नल का पेपर लिया है, एंड देन सिंपली पेस्ट द DOI, क्लिक ऑन सर्च, साइटेशन मशीन citationmachine.net. इसके अलावा दूसरी एक्सेप्ट ही करेंगे तो ओपन ही नहीं होगा. देखिए हो गया ना. तो यहाँ पे आप जो है सो इस वेबसाइट पे जर्नल पे क्लिक करिए, क्लिक ऑन जर्नल एंड सिंपली पेस्ट द DOI. जो you have now click on site,
आपने DOI पेस्ट किया, click on site, go back, go down, click on continue, click on next, सर्च करिए, सर्च and then ये जर्नल को ठीक नहीं हो गए। क्रिएट साइटेशन, हाँ ये है ना, इसमें आप सर्च करें, क्लिक ऑन सर्च, नीचे आइए, कुछ आया, क्लिक ऑन साइट, क्रिएट साइटेशन, क्लिक ऑन साइट, कंटिन्यू, कंटिन्यू, 2 बार नेक्स्ट मांगेगा, कंटिन्यू, कंप्लीट साइटेशन, यू कॉपी दिस। अब देखिए इसमें why we do this, why I preferably do this, इसमें क्या है, ये एक वेबसाइट है, कोई पेड नहीं है, it is free of cost. Maybe after 20-25 references they'll ask you to visit view 15-minute ad, that's what they do. So why I use this, in most of the papers you will see that some uniformity is there. आपने बहुत सारा पेपर देखा होगा, ये देखिए कोई सा भी पेपर, जैसे अभी इसकी बात कर रहे हैं, just see the references of my paper, कुछ आपको एक सा लग रहा है सब, getting my point? All the references look like that it is created from one single source, because all these are basically created from this particular website. अब यहाँ पे आपको APA citation चाहिए वो मिल जाएगा, हार्वर्ड स्टाइल चाहिए वो मिल जाएगा, whatever you want you will get it. होता क्या है, हम 4 अलग अलग जर्नल के रेफरेंस से कॉपी करते हैं रेफरेंस, वो सब अपना एक अलग फॉर्मेट फॉलो किया है, गेटिंग माय पॉइंट? किसी ने गलत नहीं किया होगा, सबने ठीक किया होगा, बट आपने जब 10-10 अलग अलग लोगों से लिया है तो आपके पेपर में खिचड़ी है. You have the mixture of all the different flavors. So that is what can be avoided if you use a single source. या तो Mendeley यूज कर लीजिए, that is the best one. I don't know much about Mendeley, so I am a desi person. I use this formal text. That's what I said. Mendeley is the best one. This should be a second option. But what I have, Scribble is also there. So what I have used, I am showing you. So I think that's more than enough for the research paper. This is a survey paper and outline of a survey paper. I will not consume much time. I will take 5 more minutes only to answer one question. Sir, how to identify novelty in a survey paper? सर्वे पेपर में नोवेल्टी क्या होता है, इस चीज़ को बताने के लिए बस 5 मिनट और लेंगे. Just have a look and try to understand. So before that, these are some of the manuscript pre-submission checklist. This is called publication success framework. There is no such framework, believe me. जैसा कि अभी एक ऑडियंस ने बोला, सर all these are theoretical thing, बहुत अच्छी बात है, ये फटी है, इससे कोई मतलब नहीं है, जो पब्लिश इसको होना होगा सो होगा. Getting my point? There is no success framework like that. Key takeaways are choosing the right journal, choosing the methodology. At the end of the day, if you have learned anything new in this talk, that should be your key takeaway. These things are not, these are materialistic things, and this is my contact. Because I am leaving this PPT now, I am switching on to some papers. So, ठीक है? You can follow me on LinkedIn, and I am very much happy to contribute in terms of enhancing quality of a paper. अगर किसी को पेपर के क्वालिटी के enhancement के लिए बात करना है, ping me on LinkedIn. I'll give you my WhatsApp number. You can then ping me on WhatsApp. Oh, giving some comments or like that, I am very much open and very much okay with it. Do not expect anything like unethical from my end. Do not come to me if you don't have time. Okay. So time लगता ही है पेपर publication में, उसमें कोई कुछ कर नहीं. Okay. So that is one thing. Now we move on to few things like
सर्वे पेपर में हम मेथड वो नोवेल्टी कैसे लाए. दिस इज अ सर्वे पेपर, यूनिफिकेशन ऑफ ब्लॉकचेन एंड आईओटी, रिक्वायरमेंट, वर्किंग मेथड, चैलेंजेस एंड फ्यूचर डायरेक्शन. अब आपने अगर कुछ सीखा होगा तो पहले लाइन में गलती निकाल देंगे इसमें. गेटिंग माय पॉइंट? सो लाइक दैट. बट आई अगेन से देखिए 2020 का पेपर है यार, 6 साल पहले नहीं आता था, बच्चे थे, अभी भी नहीं आता है. बट देखिएगा प्लीज. हाउ सी ब्लॉकचेन एंड आईओटी, दिस इज अ सर्वे पेपर. ओके, हाउ आई हैव आउटलाइंड नोवेल्टी इन दिस पेपर. I'll say प्रीवियस वर्क वाले सेक्शन में आते हैं. ठीक है कि प्रीवियस वर्क क्या क्या है. आईओटी और ब्लॉकचेन के सर्वे में तो भाई कुछ नोवेल नहीं है. आईओटी के बारे में बताइएगा, ब्लॉकचेन के बारे में बताइए, हो जाएगा. बट हाउ टू एडवोकेट दिस थिंग कि कैसे हम बताएं सामने वालों को यार हमारा तो नया है. द ब्लॉकचेन मिटिगेट्स further the use of cryptography owing to wide spread of blockchain. देखिए यहाँ से this is the technical. Owing to the widespread adoption of blockchain, there have been number of previously published surveys. ब्लॉकचेन के वजह से बहुत सारा प्रीवियसली पब्लिश सर्वे है. मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मेरा ही इकलौता सर्वे. There are existing many surveys. There have been previously published surveys that have focused on blockchain and IoT only. They have also focused on blockchain and IoT. These surveys are summarized as follows. I am also citing them. कि these are the surveys. देखिए, Christidis et al. And all, ठीक है, Zhang et al, Han et al. अब देखिएगा यहाँ पे चेंज हो गया है. Propose से हम कहाँ आ गए? Christidis et al. Presented, provided, discussed, investigated. So ED is same, the tense is same, only the words have been changing. ये दो लाइन दे दिया. मजेदार चीज ये नहीं है, मजेदार आ गया. ये तो सारे 10 पेपर के बारे में मैं बता रहा हूँ कि भाई जिसने आईओटी और ब्लॉकचेन के बीच में सर्वे पब्लिश किया. These are अब now what I have done, very interesting, and this is of course this will be the major key takeaway. A comparative study of existing work by different author has been summarized. अब ये जो authors हैं इनके comparative analysis हमने, ये 10-15 ये काम तो published है blockchain and IoT के, इन्होंने क्या किया? Now I have outlined, इन्होंने किसी ने for example layered IoT architecture दिया होगा, किसी ने middleware requirements दिया है, किसी 5 ने threads to IoT दिया है, किसी 4 ने blockchain basics और evaluation दिया है. I have outlined 12 different metrics. 12 different metrics, 12 different metrics I have outlined that all these persons have taken care of. ठीक है? And then I have compared everyone in a table. I have listed 12 metrics. I have compared everyone in a table that this 13 people have done research in blockchain and IoT. Survey paper blockchain and IoT का इन 13 लोगों ने की. I started, this paper was published in 2020. I started from 26, 17, 18, 19, 20. As I said, 320 से लिया, 4 19 से लिया, कुछ 18 से लिया, 1 17 16 से लिया. Getting my point? Then मैंने कहा सर point number 1, अब 3 metrics I have used. One is indicating that the topic has been covered in detail, topic has been partially covered, topic has not been covered. Just try to understand what I am trying to say. 13 topics, 12 topics I have listed. Some paper has covered this in very much detail, this in less detail and does not cover this. This paper has covered, does not cover this, these two they have covered, this they have not covered properly, these two they have covered, and so on. Getting my point? So in this way these things are outlined कि ये 13 पेपर जो है सो इन 12 पैरामीटर्स पे या तो बहुत अच्छा है या पार्शियल है या एकदम नहीं कवर. ठीक? Then comes the statements. Then comes the statement research contribution. देखिए, however
although blockchain has been prevailing for several years, blockchain बहुत साल से है, there are very few comprehensive studies. Now I am somehow trying to say that I am novel, but very few that sets light on research and application of blockchain for IoT. In contrast to the work discussed in section 1.1, this paper brings forth a holistic approach for application of blockchain that have focused on integrating using 12 different attributes. अब यहाँ से मजा आएगा. To the best of our knowledge, this survey paper is the first that thoroughly covers the architecture, requirement, trend, background, working, optimized blockchain architecture. IoT solution focuses on this. All the 12 parameters. The major contribution is detailed and comprehensive and so on. Apart from exploring basics, this also presents an extensive analysis of. I told them that 13 papers have published blockchain and IoT. It means ये title सही. 13 पेपर टॉप जर्नल्स में पब्लिश हुआ. It means blockchain IoT can be combined. And these 13 papers are published. And still they are not able to investigate all these in detail. It means my paper also should be published. And then the rest is history. The rest everything remains the same. बाकी सब भी वही है, organization of the paper and all. बाकी तो फिर लिखा तो theory ही गया है, boss. लिखना तो वही है. Getting my point. But of course novelty है इसमें. Novelty in the sense is like मैं एक section मेरा होता है पेपर में recent advances. Recent advances में मेरा novelty होता है because I cite all the papers in the last 2 years. ये जैसे है, यहाँ तक ये सब theory है, सब कहीं ना कहीं से लिया गया है, reference मिला हुआ मिलेगा नहीं. But ये, this is the novelty. Here comes the novelty कि blockchain provides access control में पिछले 2 साल में क्या काम हुआ है, ये मैं एक एक करके एक एक टिक से, ये मैं कहीं से कॉपी नहीं. Because last 2 years data will not be available in any published. That becomes a इस पेपर में मैंने नहीं लिखा है, लेकिन अब मैं ये लिखने लग गया. इतना पूछता है novelty क्या है? This is aggregation of value. So more than 100 papers have been published, cited, that is published in the last 2 years that has not been online. अब हम PhD नहीं कर रहे हैं, हमें डर नहीं है आप रिजेक्ट कर देंगे. We can write anything in our paper. In a cover letter I will write. If you want to reject it. क्या हो जाएगा? दूसरे में भेज देंगे. जब PhD कर रहे होते हैं हमें डर रहता है कि रिजेक्ट कर देगा. कोई डर नहीं है रिजेक्ट करने का. I am writing whatever. I will be arrogant in my paper because I am doing something. तो ये इसी तरीके से एक पेपर और last I will show you. This paper you all will like definitely. That is again a survey paper. देखिएगा. Demystifying role of NLP in smart city application. You will love the author more than the paper. You will love the author more than the paper. Not me, the person. This is NLP for smart city published in Wireless Personal Communication, a good Springer journal. The length of the paper is I think 52 pages. Only 2 authors. Regular issue. You will love the author for sure. Please have it. And that you will find in the last page. अच्छा ये ऐसे जाएगा. This is the paper, okay. Well and good. I am not going into the technical details. अच्छा ये जरूर देख लीजिए. The same thing I am still following the same. Working towards a bachelor degree in computer science engineering. She is a BTech undergraduate student.
B.Tech undergraduate student of my university, and she started this work when she was in 3rd semester, and it was published when she was in 7th semester, 2 years time. It took us approximately 1.5 years to write. Fortunately, it was accepted in 6 months and published. तो एक B.Tech का स्टूडेंट अगर 225 रेफरेंस के साथ 50 पेज का पेपर लिख सकता है, अच्छे टेबल्स हैं, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस वर्क, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत मेहनत करा है इसमें. तो वी कैन ऑल्सो डू मोटिवेट आवर स्टूडेंट्स एट लीस्ट. Now if you as a, for example, most of us are experienced enough. If you are writing a paper on your own, I'll say you are wasting your time. You are a knowledge creator. You are creator. तो आपने guide करना है student को instead of writing yourself. This lecture is not for you at all. All of you, most of you are very much senior than me. तो ये लेक्चर जो है ये हमें अपने बच्चों को देना है ताकि they are able to write good papers, because sometimes with years passing the things have changed. Some people who had done a PhD or graduation in 2000, in the year 2000, 25 years down the line things have changed. ऐसा नहीं है कि हम आपसे ज़्यादा समझदार हैं, ये है कि समय थोड़ा सा बदल गया है. Instead of reading the document of last 25 years, you can somehow look at these lectures, 1 or 2 FDPs. They will maybe give you some inputs कि पिछले 20-25 साल में क्या बना. आपने MSc या MTech या PhD किया होगा 2000 में, 2002 में, 4 में, whatever it is. अब बदले. आप अपने अगर सिनेरियो से बच्चों को करेंगे तो फिर वो नहीं चलेगा. तो that is all. So that's all for the day from my end. I hope I was a bit late. Apologies for that. है ना? But I hope कि जो भी 1-1.5 घंटे जितने देर था, so I think that it was worth here. है ना? You were an excellent crowd. I have been taking FDPs in this July itself. I have been part of 7 FDPs. 7 FDP गया. इससे अच्छा crowd, especially because you all are experienced enough. आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, सब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है. अब बच्चों के FDP में जाते हैं वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है. ये चीज़ है, सम आर टॉकिंग, सम आर यूजिंग मोबाइल फोन्स एंड ऑल. हम तो टीचर की तरह पढ़ाते हैं सर, FDP में भी हम टीचर की तरह पढ़ाते हैं. आप मोबाइल फोन यूज़ कर रहे हैं तो आप ये कर रहे हैं तो. बट एक्सीलेंट, आई लव बीइंग हियर. थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू टू द ऑर्गेनाइजिंग टीम for inviting me. And at the last moment I have changed my schedule because of a conference tomorrow. My schedule was tomorrow, and thank you ma'am for making this possible. I love being here. Thank you. For sharing your invaluable knowledge, rich academic experience and practical insights with us. I think now everyone knows how to submit how to prepare a manuscript before submitting it for publication, and now we can improve it in a better way. Your thought-provoking deliberations, engaging presentation and inspiring interaction have made today's session truly enlightening and intellectually stimulating. The depth of your expertise and the clarity with which you explain complex concepts have greatly enriched us. As we conclude this session, I am confident that the knowledge and insights gained today will inspire us to continue learning, innovation and striving for excellence in our academic and professional endeavors. Thank you for your gracious presence, sir. We look forward to your participation in the upcoming sessions for faculty development program. Thank you everyone. Please join us for lunch in the mess. Welcome back to everyone for the second session of day 2 of the ATAL FDP. I, Dr. Anu Goyal, welcome you all on behalf of MAIMS. It's my pleasure to introduce our resource person for this session, Ms. Rashmi Agarwal. Ms. Agarwal is an assistant professor at Maharaja Agrawal Institute of Management Studies, affiliated with Guru Gobind Singh Indraprasth University, Delhi. She holds MC degree and has qualified UGC NET in computer science. With over 15 years of experience in academia and industry, she has been actively engaged in teaching, research and mentoring students. Ms. Agarwal has published several research papers in reputed national and international journals in the area of AI, neural networks, weather forecasting,
climate informatics, and predictive analytics. Her research focuses on applying real-world challenges through forecasting and data-driven decision-making. We warmly welcome you, ma'am. Miss Rashi, ma'am, now I would like to invite Dr. Monica to present memento and sapling to Rashi, ma'am. Over to you, ma'am. Very good afternoon, everyone. How many of you are very well versed with this topic, machine learning? Anybody who knows something about machine learning? It's been here since last, maybe we are hearing this term since last 5 years. But still, this term is still very difficult for us to actually describe. So can anyone please describe how machine learns through an example? How machine is alike humans? Let's take a very simple example. You are given this data. Okay? There are two variables, x and y. Right? 1 to 10 is the x variable, and from 5 till 50 I have given values for y. Can you predict what will be the value of y for the value 9 here? 45. 45, right? How have you got this value 45 from this table? You are watching the pattern, and can you tell me the equation? If you have to formalize this thing based on this data, what kind of equation will you make in order to get this kind of answer? Very nice. Y equals to 5x, right? Just like humans, by looking at the data, you are finding out the pattern in the data. In a similar manner, when you are giving data to the machine, it is finding out what are the patterns in this data, and it is formalizing this data into this equation, right? I hope the formal term of why machine is needed in order to behave like a human is clear to everyone. Now, what are the types of machine learning? First is the supervised learning. As of now, if you are a student, you will hear three kinds of terms: supervised, unsupervised, and reinforcement learning. But yes, there is one such term which is known as supervised. Let's start with supervised learning. What happens in supervised learning? Just like, if you can take this example, here we have got the input variable as well as the output variable. I know based on input what value am I getting as the output, right? So supervised will always work upon already given data, the input as well as output. And there are two types of supervised learning. One, in a very basic term, it is known as regression, and the other one is classification. What is the difference between these two? If you look at this data consists of numeric variable or categorical variable. It is numeric in nature, all the data points are numeric, and these are categorical, no or yes. So what am I doing? If my prediction here is classifying whether based on CGPA are you able to find out whether the student is placed or not. In this case, it is a classification problem. However, if I am predicting something based on the numerical variable, here also I am getting all the numeric values here. So I am predicting what will be my package based on the CGPA provided to me by the student. So in this case, I am predicting a value. So whenever you are predicting a numeric value, I am going for regression. Very basic regression. After, when I am talking about machine learning, obviously there are this thing has evolved, and we have neural network, random forest, and various other things are there. But we will start with a basic regression method. So now, if in a pig I ask how many dogs are there, will it be a classification problem or regression problem? Classification. How many dogs I am asking? In a picture, I am asking how many dogs are there. The answer will be
Answer will be number. So whenever I'm predicting a number, it will be regression. Yes. So you need to know what you are predicting. That's why I'm giving you this example. The moment you know the answer is numeric, it will always lead to regression. And whenever you know, if you are given a pic and you have to find out whether a particular picture has a dog or a cat in it. Now what you are doing, you are classifying a particular picture into dog or cat. In this way, you are classifying the data. Clear to everyone? Still, Yeah, there is one doubt. Like regression is always a relationship between dependent variables. this is also a relationship. But yes, that this I understand. But in your case, like how many dogs are there? This is for independent Data, variable. how will I give the data? The data will be in the form of pictures. Not necessarily that every time you will get this numeric data. Right. The answer is prediction. The answer is numeric. 1, 2, 3, 4. But here the input will be the pictures. And based on the pictures, it will extract the useful information from which it will get to know whether it will classify the dogs first and then it will count the number of pets in that feature. Matlab depending upon the output, we Output only, yes. check whether it is a classification kind of a Exactly. relationship or regression. Yes, ma'am. Only the output is important here, not the input. Input can be in the format of pictures, it can be numeric data, it can be your word data. आप जब feedback देते हो किसी को भी, तो आप या तो कोई form fill करते हैं, you give your feedback in MS Word format, right? So that document, that PDF document can also be taken as the input data. A very simple example is you get the reviews for a movie, 3.5, 8.5, the rating for the movie. How does that rating arrive? I have already given the paragraph that the movie was good, the action was too good. Based on these words, it classifies initially that these words come in the positive direction, these words come in the negative direction. And if the number of negative words are more, then the review will be less. It will range between 3 to 5. However, if the positive words are more than the negative words, obviously the review of the movie will be better in this case. So it depends, you are classifying or you are predicting. I think it's clear. Moving ahead, next is unsupervised. What is the difference between supervised and unsupervised? So far, in supervised, we are giving label data. That means I am giving input also and I am giving output also. If it is classification, it is regression, I am giving output, right? But there are some problems initially in which output might not be there initially. So there are 4 types of unsupervised learning. First is clustering. Next we have dimension reduction. Next we have association. And the last one we have anomaly detection. Let's start with the very first thing, clustering. You might have experienced this various times that whenever you view Netflix, it gives the preference of your movies. Has anyone thought about it, how that preference comes? If I am very fond of watching love stories, so next time whenever I will open Netflix, it will show a plethora of love stories too. How does Netflix does these kind of things? Based on a History, yes. Based on previous search. History, so you think that it is making history of every such person who is watching Netflix? Yes. Do you think if there are 30 people in the class, will I be able to ask everything about you? Not everything. Technology makes you You can't be that. Technology for sure is doing that. The keywords which we had used for writing after which type of content you want. If in the same account you have 4 screens running in the same room, all 4 screens will I agree. Netflix is one such recommender system which is actually watching you personally. The moment you go to washroom, it knows for how many seconds have you given the pause thing. So it knows how many times you have rewatched a particular scene in the Netflix. It knows you to that extent, right? But yes, They use algorithms to detect what each and every individual is using or doing their patterns that
let's take a very simple example wherein if I'm taking this CGPA, I don't have this output here. I only have these two input variables which I have also shared with you, CGPA and IQ. And I have just given the random values. Now I want to group the students based on CGPA and IQ. I want to find out the relationship. As per my perspective, a lesser CGPA student will have lesser IQ. That is my perspective. I am not sure. But how will I prove it to other people that this particular thing is true? Or might be possible there are many variables. Your age is there, the kind of movies you watch, the income level. So based on that, what it is doing, it is making out these clusters. जैसे कि सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको कि जब भी आप whenever you use washing machine, तो it is our daily practice कि हम जितने भी white clothes होते हैं, जो colored clothes होते हैं, dark color के, उनको अलग धोते हैं हमेशा, और जो भी हमारे light colored clothes होते हैं उनको हम हमेशा washing machine में अलग करते हैं. This is our basic instinct कि दोनों को साथ में wash नहीं करना, तो clusters बना के हमने रख दिए. ऐसे ही मशीन भी आपने जो डेटा प्रोवाइड किया है, इट इज फाइंडिंग आउट द क्लस्टर्स फ्रॉम द डेटा. यू कैन नॉट डू, आपके पास अगर मैं बोलूँ कि 2500 रोज का डेटा है, विल यू बी एबल टू फाइंड आउट द ग्रुप्स इन दैट डेटा? ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू लुक इनटू द डेटा. सो हियर when you don't have any output variable, let machine decide what type of clusters will be there, how many clusters, and based on the data points will be there. Next is, after clustering we have dimension reduction. In this scenario we only have two inputs, but not every time your data set consists of 2 or 10 inputs. There might be some data sets when we are talking about heavy files which are of pictures. So in this case, obviously your input variables range from 20 to 50. Do you think the analysis will be easy here if you are providing 20 to 50 input variables? What will you do if you have these much input variables with you? Try to club them or similar characteristics if you have. Yes, we try to club them. Let's take a very simple example. If I am predicting the house price, and the data that I have got here is, let's suppose, the number of rooms and the number of washrooms, right? So these are two columns. Very roughly I have given this data. Can I club these two columns into one column, providing this square? Square meter. Okay. So do you think this is a better way of predicting the house price? I can always club these two columns and make one column. And the machine learning algorithm which we use here is principal component analysis. We use this algorithm in order to reduce our dimensions. Euclidean matrix we make first of all, and then it reduces. All the columns which are initially there in the data set are already there in PCA. But the name of the columns will always change. Earlier, if I am having number of rooms and number of washrooms, these two columns will also be there, but these will be clubbed into a new column there. Clear? Next is association. Association means, very practical example of association is whenever you buy any mobile phone. Along with the mobile phone, you must have seen that the phone cover, the charger and various other connected things are given to you. You can also buy this and that. It happens. If you are buying a laptop, again laptop की battery, laptop का charger, laptop का cover, laptop का bag, everything will be there at Amazon. ठीक है? So how this association takes place? You must have visited any superstore market. आपने देखा होगा what is the pattern that they follow. क्या ऐसा होता है कि you just get into supermarket और सब कुछ ऐसे कुछ रख दिया जाता है? नहीं, आपने देखा होगा ब्रेड, बटर, जैम ये हमेशा एक सेक्शन में होता है. ठीक है? जितने भी शैम्पूज होते हैं, जितने भी आपकी बॉडी रिलेटेड सामान होता है, it is always kept at a different place. ठीक है? So now what is happening here? They have find out that
are associated with each other, and how will they find out whether these things are associated with each other? So let's take an example. I will just take out the last 2 years ka data wherein I have got milk in the transaction. Along with the milk, let's suppose in 80% of the transactions, butter was also purchased, and in 20% of the transactions, let's suppose jam was purchased. So what do you think, based on this correlation, which particular product will you keep with milk? Jam or butter? Because 80% of the time a person has taken butter with milk. So I have a very strong correlation. I got this association, and now I will always eat these two things together. So this is the way association is done. And in US there is a very famous study though, the relationship between beer and diapers. It has been seen a person, a father who comes for buying a beer or diapers, he will also buy beer with diapers. It's too contrasting actually. These two things are not related with each other. But at Walmart, they actually found out this correlation. And when these two things were placed together, their sales reached to the maximum level. So, very absurd association, but this makes sense. बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाती है. Yes. हम आपको कोरिलेशन नहीं दिख रहा है तो Next we have anomaly detection. Anomaly detection का a simple example is an outlier. Whenever, let's take an example, any credit card company will view plot my transactions like this, whatever transactions I make, right? So my transaction, every time I make transaction, my monthly transactions are always between, let's suppose 20,000 to 50,000, not more than that, every month. So in a particular month, it has taken this data, it has found this data, it has plotted this data, and let's suppose on one day, I make a transaction of 1.5 lakh. Yes. So now if you will look at this scatter plot, it is an anomaly for me, it is an outlier for me. The moment they detect in this scatter plot that there is one point which is falling 2 above or 2 below the cohesion in the points, in that case they will raise an error, and that's why it is called anomaly, finding out the anomaly from your data point. The second case, most of the times whenever I do transaction, it happens in Delhi. And one day it happens from, let's suppose, Hyderabad, and these two anomalies are there. Again, a question. So finding out the anomaly means you are finding out the outlier in the data. So I hope unsupervised learning is clear to everyone. I have not given any kind of labeled data. Labeled data है because कोई output है ही नहीं यहाँ पर. मैं सिर्फ जो मैं input कर रही हूँ, कंपनी सिर्फ उसी input को view कर रही है. उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रही. और जहाँ भी उस input से related कुछ भी spike आता है, तो now it will raise an error. Clear. Next thing is semi-supervised. Semi-supervised means not, अब जब हम लेबल करते हैं, whenever we label some data, it takes a lot of money. आप एक पर्सन को हायर करते हो जो आपके इस डेटा को लेबल करते हैं, आपका पैकेज का बनाते हैं, उसको यूनिफॉर्म बनाते हैं. तो अगर आपको कुछ ऐसा नहीं करना, बिकॉज अगेन वेरी एक्सपेंसिव परफॉर्मेंस होता है जब आप डेटा को लेबल करते हो, तो अब क्या करेंगे, हम सेमी सुपरवाइज लर्निंग यूज़ करते हैं. पहली बार आप सिर्फ डेटा लेके जा रहे हो एंड एट वन टाइम वो आपसे फर्स्ट टाइम पूछता है उस डेटा को और वो अपने आप लेबल करना शुरू कर देता है. मशीन खुद लेबल कर रही है. सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, लेट्स सपोज गूगल फोटोज पे यू अपलोड सो मेनी फोटोज. हम सब बहुत सारी फोटोज अपलोड करते हैं, इवन ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम. ठीक है, सो नाउ आई हैव गिवन ग्रुप फोटोग्राफ. अब वो मेरे से पूछता है इज दिस यू. द मोमेंट इस वो मेरे से पूछता है फेसबुक, मैं कहती हूँ येस इट इज़ मी. तो नाउ फ्रॉम दोज 1000 फोटोज, जितनी भी फोटोज फेसबुक के पास है, वो सारी की सारी फोटोज को द मोमेंट आई हैव टैग माई फोटो एज राशि, इट विल टैग दोज फोटोग्राफ और वो सबको टैग कर देगा 1000 फोटोग्राफ विच इज देयर एट द सर्वर. So next time whenever I will upload my pic, it will say it's Rashi.
ऐसे ही अगर मैं अपने पेरेंट्स की फोटोग्राफ करती हूँ तो वो मेरे से पूछेगा इज इट योर मदर, आई विल से यस एंड इट विल टैग माई मदर इनटू दैट पिक्चर. So first time it is using my label and next time the moment I upload any picture it will take that label and give that label to that picture. Semi-supervised. When I know that label data is too expensive. Reinforcement learning, the last one, not given any data. सब कुछ खुद से सीखो. आप जैसे ही गर्म चीज़ पे हाथ रख दो the first reflection that you get is हटा लो हाथ, बहुत गर्म है. सीखा ना आपने, पनिशमेंट मिली. अब नेक्स्ट टाइम अगर आप दोबारा उसको टच करोगे और तब भी आप कह रहे हो कि हाँ मैं तो टच करूँगा, तो पनिशमेंट ही मिलेगी, हाथ ही चलेगा आपका और कुछ नहीं होगा. ऐसे जो बच्चे होते हैं वो भी ऐसे ही सीखते हैं. जैसे कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो हम कहते हैं सबके पैर छुओ. जब बच्चा पैर छूता है किसी बड़े के तो हम उसको चॉकलेट देते हैं, और नहीं छूता तो कहते हैं आज कोई तुमसे बात नहीं करेगा क्योंकि तुमने पैर नहीं छुए. सो नाउ द चाइल्ड इज लर्निंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट. और रीइंफोर्समेंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो रियल लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं इट इज़ सेल्फ ड्राइविंग कार्स. ये आपने जो पीके मूवी में भी देखा होगा कि जब वो गाल पे जब भगवान जी की फोटो लगा लेता है, वो लर्न कर रहा है. तो पहले जैसे वो फोटो लगा लेता है उसको पता है कि भगवान जी पे कोई थप्पड़ नहीं मारेगा. सो ही लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक और सीख गया. अब कोई पनिशमेंट मिलती है या रिवॉर्ड मिलता है, तो आप धीरे धीरे सीखोगे. सो वी आर गोइंग टू कवर क्लस्टर प्रॉब्लम टुडे. ठीक है, तो आपके पास जो डेटा है अब आप वो ओपन कर दीजिए एंड वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द फर्स्ट प्रॉब्लम विच इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्लस्टरिंग. In the next sheet. When we talk about AI, it is still a black box to us. The best way is you do first thing yourself, find out the answer of that thing and then use machine and check whether your answer and the machine's answer is same or not. If it is not same, if it is not same, then that means machine is making some kind of change in the equations or in the procedure of the data. You need to find out that. Okay, looking at the data. Do you think we should, how many input variables are there in this data? There are 4. We can now, I have just taken 3. I have delete. आप delete मत करो, एक और sheet बना लो, ठीक है? क्योंकि कल हम जब regression करेंगे तो we will be again using this data. आज हम clustering कर रहे हैं ना, अभी हमारे पास output है ही नहीं, input है बस. क्लस्टरिंग के लिए 3 है मैम हमारे पास. 3 है. आपके लिए फर्स्ट कॉलम इम्पोर्टेंट है? नहीं. क्यों नहीं है? तो आई थिंक जरूरत नहीं है ना, उसमें कोई वैल्यू ही नहीं है डेटा है वो उसका. तो सब. सेकेंड और थर्ड शैल वी स्टार्ट विद आवर एनालिसिस. यस बिल्कुल ठीक है. डेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है डेटा में. अभी रुक जाओ. आपके पास भी ये डेटा डाउनलोड कर लिया ना आपने? No problem in the data. How many of you will just proceed with the analysis? First step is to clean the data. Clean. The data is clean. No missing values are there. No inconsistency is there. No duplication is there in the data. CGP is always in the point. It's perfectly fine. Yes, Anurag, बोलिए आप भी. देखिए, चलिए let's start. The first and foremost thing that we should always find out in the data is find out the mean and the standard deviation. Right? क्यों जरूरी है? Let's check. I hope average का formula सबको लगाना आता है, ठीक है? So I'm using equals to. अगर नहीं आता please stop me where you think you are not getting it because every step is important. Average and I am finding out the average of this data. The data is still how many rows are there? 193 or 194?
The last cell, 194. 194. This is the, shall I write the formula also? 201. 201. And okay, this is for CGPA and the next is IQ. Similarly, I will find it for Dragon and you will find the mean of IQ. Standard deviation, since it is sample, I am using STDEV.S. Again, the same thing, which is B2 till B1201. Got the standard deviation also for B. Now again the same question, do you still think that we should proceed with the data analysis? If you are doing any kind of analysis, will you proceed with this data? Why and why not? विशाल इनकी यूनिट्स जो है मीन की सीजीपी की यूनिट इज नॉट सिमिलर टू आईक्यू बिल्कुल ना. अगर मैं IQ की बात करूँ तो IQ is varying between maybe 60 to 200. ठीक है, और CGPA का जो लेवल है वो 1 to 2, दोनों की स्केल्स ही बिल्कुल डिफरेंट है. एक रेंज कर रहा है 1 to 10 में और एक रेंज कर रहा है 100s में. तो when the two parameters are having different scales, the first method that we should always adopt is Z-score. स्टैंडर्डाइज करिए वैल्यू को ताकि दोनों पैरामीटर्स की वैल्यू विद इन रेंज आ सके. सो Z-score की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आई एम मेकिंग डिफरेंट शीट एवरी टाइम in order to show you. So again I am taking these two columns only now. So now what am I doing? Z-score का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ. Every value of CGPA, मैं यहाँ पर CGPA लिख रही हूँ, CG minus mean of CGPA upon standard deviation. ठीक है, Z स्कोर सबको आता होगा. You are what we are doing here. हम क्या कर रहे हैं? Every point of CGPA, we are subtracting mean from this point and dividing it by standard deviation. So what we have done here is, अगर मैं यहाँ पर लिख करती हूँ इस काम को, so simple. The first cell equals to the CGPA. This is the first cell. Bracket star. Next is minus. This is the CGPA का mean. So I am freezing it because I don't want this particular value to change. Mean is constant for every value. ठीक है, so I am freezing this value. Bracket close. Divide by what is the standard deviation. This is the standard deviation. Again I am freezing because my standard deviation is constant here. ठीक है. Just drag it till the end. I have got the standardized value of CGPA. Next we have IQ. In a similar manner I will do it for IQ equals to the IQ की first value minus the mean, freezing it. Divided by the standard deviation, again freezing it. Store and drag. It will automatically do it for the rest of these cells. I hope you all have done it. किसी को doubt है तो please ask me. इससे पहले एक और चीज, अगर if I am plotting this data, just a scatter plot, simple. I have selected the data.
and we have a scatter plot here. Am I finding any kind of cluster in this data so far? There is no such cluster. अभी it is a continuous data, एक upward trend दिखा रहा है, and by looking at this data, I know that with the increase in the CGPA, the IQ also increases. But अभी भी I have not grown कि इतने CGPA पे इतना IQ है, इतने CGPA पे इतना IQ होना चाहिए और इतने CGPA पे इतना IQ होना चाहिए. How many clusters will I make? मुझे तो नहीं पता कि कितने क्लस्टर्स बनने चाहिए इस डेटा पे. 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, हो सकता है 2 CGPA बहुत होने चाहिए क्लस्टर के. तो देयर इज वन मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ क्लस्टर्स इन द डेटा. वो एक्सेसिव में करा सकती हूँ, बट वो पूरे का पूरा सेशन एक मेथड में चला जाएगा. तो 2 तरीके के मेथड होते हैं. फर्स्ट इज द एल्बो मेथड. एल्बो मेथड क्या कहलाता है? नहीं, कोई बात नहीं, वो मैं कल भी सिखा दूँगी आपको भी. कल भी एक और हैंड ऑन सेशन है, ठीक है? आपका करते हो अभी नहीं, सिंपल नॉर्मल को किया है, नॉर्मल को ही प्लॉट किया है. इन ऑर्डर टू फाइंड आउट अभी जो डेटा है मेरा वो किस ट्रेंड में जा रहा है. हो सकता है मेरा डेटा कुछ ऐसा होता है कि मैं यहाँ पर पॉइंट्स मारती हूँ मेरे, तो मेरा डेटा ऑलरेडी क्लस्टर्ड हो. ठीक है, मुझे अभी भी समझ में नहीं आता कि वो क्लस्टर्स किस टाइप के बनते हैं. यहाँ पर मेरा कॉन्टिन्यूस डेटा है, तो बस मुझे भी इतना पता है. अब कितनी इसमें पैटर्न हो सकते हैं वो मुझे फाइंड आउट करना है कि वो कौन कौन से पैटर्न हैं इस डेटा में. ठीक है, तो किस तरीके से ये वर्क करता है. इनिशियली लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक क्लस्टर बनाती हूँ, एक डॉट यहाँ पे लगाया. अब इनिशियली वो क्या करेगा, एक क्लस्टर पर डिस्टेंस निकालता है हर पॉइंट का उस पॉइंट से. ठीक है, और जितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स पे वो डिस्टेंस सबसे कम हो जाता है वो उसको फ्रीज कर लेता है. इट इज लाइक योर एल्बो. तो यहाँ तक चल रहा है, यहाँ पर ज़्यादा नहीं हो रहा, तो जिस पॉइंट पर वो और गिरना शुरू हो जाता है उस पॉइंट को हम ले लेते हैं. इससे ज़्यादा क्लस्टर्स की जरूरत नहीं होती. ठीक है, तो ये प्रॉपर एक एल्बो मेथड बनता है आपका. वो मैं अभी आपको कोलैब पे कराऊँ. ठीक है, सो जहाँ पर आपका k इक्वल्स टू जहाँ पर एल्बो बने आप उस पॉइंट को उठा लो. दैट मीन्स यू नीड दीज नंबर ऑफ क्लस्टर्स फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा सेट, वट एवर डेटा सेट यू आर. अभी के लिए बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टेस्टेड दिस डेटा, तो हम यहाँ पर 3 क्लस्टर्स लेंगे. ये डेटा पे मैंने फाइंड आउट कर लिया कि 3 क्लस्टर्स आर मोर देन इनफ इन ऑर्डर टू ग्रुप द स्टूडेंट्स इनटू दीज क्राइटेरिया. ठीक है, सो नाउ अगेन मूविंग. I have got the standardized data. ठीक है, अब next task क्या है? I know the number of clusters are 3. So what am I doing? I am making cluster 1, cluster. Three clusters and CGPA and I. Okay, tell me, anybody who can tell me what this 0.38 means after standardizing the data. Standardize करने के बाद ये वैल्यू मुझे क्या समझा रही है? Standardize के लिए हम Z score यूज करते हैं, सिंपलेस्ट मेथड यूज करते हैं. Z score की वैल्यू है ना कि हाँ, ये Z score की वैल्यू आ गई है सबके लिए. तो कैसे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, अगर मैं 0.3 कह दूँ तो जो अगर हम एक पहाड़ बनाते हैं वो जो नॉर्मलाइजेशन का, स्टैंडर्डाइजेशन का है ना, तो जो वो पीक होता है उसको हम बोलते हैं वेयर द एवरेज इज 0. ठीक है, आपकी 0.3 मीन्स ये विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है आपके एवरेज के. सिमिलरली -1 से इट इज गोइंग लेफ्ट ऑफ दैट हिल. ठीक है, तो ये आपकी डेविएशंस बताती है फ्रॉम द एवरेज थ्रू योर स्टैंडर्ड डेविएशंस 1, 2, 3 कितने स्टैंडर्ड डेविएशंस वो अवे है, कितना वो पास है एवरेज को. तो ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन पास है टुवर्ड्स राइट, ये इधर की साइड है, माइट बी 1 माइट बी 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस माइनस फ्रॉम द एवरेज. ठीक है, सो नाउ अब यहाँ पर मशीन लर्निंग काम आता है. अब आपने क्या किया, जैसे आपने बोला कि एक सिंपल सी प्रोग्राम आपको दिया था, जब जहाँ पर आपको 1 to 10 मैंने दिया और बोला कि 9 की वैल्यू बताओ, क्या होगी? आपने बड़ा आराम से बता दिया. यू डोंट नीड मशीन फॉर दीज थिंग्स. मशीन लर्निंग कहाँ पर काम आती है? जहाँ पर यू गिव एनी रैंडम डेटा टू दी मशीन एंड इट इज नाउ ऑप्टिमाइजिंग योर डेटा इन ऑर्डर टू रीच अ वैल्यू जहाँ पर वो आपको मैक्सिमम रिजल्ट दे. जैसे आप एक हिल के ऊपर खड़े हो और आपको लगता है ये रहा स्लोप, छोटा सा एक गड्ढा है, जहाँ पर आप खड़े हो आपको गड्ढा वहीं नजर आ रहा है, इसीलिए आप बोलोगे ये मेरे लिए तो
मशीन क्या करती है, उस पूरे हिल को एक्सप्लोर करती है और जो सबसे स्टीप गड्ढा नजर आता है उसको वो वहां तक लेकर जाती है जो आपका ह्यूमन नहीं कर पाता है अभी, ठीक है। तो मशीन गूगल मैप हम यूज कर रहे हैं, इट इज एआई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे नेट जब आप ओला यूज़ करते हैं या हम उबर यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि आप बोलते हो कि हाउ फार आर यू, और जो ड्राइवर होता है वो कुछ टाइप नहीं करता, उसके बेसिस पर आंसर आ रहे होते हैं और वो मिनिमाइज कर रहा होता है ना। तो इट इज़ जैसे कि आप अगर किसी आपको कहीं जाना है कहीं, ठीक है, तो जब आप फर्स्ट टाइम जाते हो तो आप किसी से पूछ के जाते हो, पता कर कि यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। फर्स्ट टाइम आपने ऐसे ही किया, आपको नहीं पता वो घर कहाँ है, लेकिन जब आप 2-3 बार चले जाते हो तो अब आपको पता है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है ऑप्टिमम वे क्या होगा। जैसे मैं अगर गाजियाबाद जाती हूँ तो मुझे पता है मेरे पास मेट्रो भी एक ऑप्शन है, कार भी एक ऑप्शन है, बट आई नो मिनिमम रूट मेरे लिए मेट्रो ही रहेगा हमेशा, सो आई विल ऑलवेज ऑप्ट फॉर मेट्रो, ठीक है। तो ये आपका मशीन बहुत आराम से कर पाती है, ठीक है। ये ह्यूमंस के लिए बहुत बड़े डेटा को यूज़ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। सो नाउ व्हाट एम आई डूइंग, मैं हर CGPA के लिए, सिंस आई नो देयर विल बी 3 क्लस्टर्स, मैं रैंडम वैल्यूज दे दूँ। अभी क्लस्टर का मतलब क्या होता है, जब आपने डेटा को प्लॉट किया था तो आपका एक पूरा सिस्टम था। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं 3 पॉइंट्स बना रही हूँ उस डेटा पे और मैं कह रही हूँ कि मुझे उस पॉइंट को इस तरीके से मिनिमाइज करना है कि जो डिस्टेंस है पॉइंट्स का वो उसके साथ साथ आ जाए, मिनिमाइज कर दो उस पॉइंट का कि डिस्टेंस सबसे कम, वो पॉइंट उठा लो जो सबसे कम डिस्टेंस पर आए। तो अभी इनिशियली मैंने क्या किया, मैंने सिंपल रैंडम वैल्यूज दी थी यहाँ पर 0 and 1.5 and the same I am doing it for यहाँ 3 क्लस्टर्स हैं। क्लस्टर 1 मैंने इधर के लिए रखा, क्लस्टर 2 ये रहा और क्लस्टर 3 ज़्यादा CGPA के लिए रखा। एंड कोई भी रैंडम वैल्यू आप यहाँ पर दे दो, 1 दे दो, 0.7 कुछ भी दे दो। अब मैं यहाँ पर इस तरीके से स्टार्ट कर रही हूँ, आप अब मशीन को लर्न कर लो कैसे वो लर्न करें, ठीक है। सो नाउ अगेन व्हाट एम आई डूइंग हियर, अब मैं क्या करूँगी यहाँ पर, अगेन आई एम राइटिंग, यहाँ पर मैम आपने 3 सेंट्रोइड्स ले लिए, 3 क्लस्टर्स बना रहे हो ना, तो आप क्या करो ग्रुपिंग कर दो। तो अब ये 3 डिसाइड मैंने पहले ही प्रोग्राम चला रही हूँ, मैं आपको कोलैबोरेटिव चलाकर दिखाऊंगी कि आपको कितने क्लस्टर्स ले लें, कितने क्लस्टर्स होने चाहिए इस डेटा पर। इट माइट बी 2, इट माइट बी 3, तो 3 क्लस्टर्स है, इसमें मैंने 1, 2 और 3 क्लस्टर्स। नहीं, ये आपके नॉर्मल डेटा पर जितने आपके क्लस्टर्स बनने चाहिए, हो सकता है 2 हो जाते, हो सकता है 5 हो जाते। वो कैसे डिसाइड करेंगे? वो मैं आपको वही कह रही हूँ, ये एक मेथड होता है, एल्बो मेथड होता है, ये सिलॉट्स मेथड भी होता है, ठीक है। एक मेथड होता है कि जो नहीं, इसमें आप क्या कर रहे हो, फैक्टर एनालिसिस मैम इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, उस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल रहे हो हर पॉइंट से, हाँ ठीक है। तो मुझे 3 पॉइंट्स ऐसे चाहिए जिससे डिस्टेंस मेरा कम हो सकता है 2 पे आ जाता, हो सकता है 3 पे आ जाता, हो सकता है 6 पे आ जाए, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स दैट है। हाँ वो मेथड है मैम, वो सिंपल एक लाइब्रेरी आपको यूज़ करनी है, फंक्शन यूज़ करना है, यू विल गेट टू नो। अब नेक्स्ट थिंग इज अगेन व्हाट एम आई डूइंग, मैं यहाँ पर तीनों सेंट्रॉइड ले रही हूँ और मुझे यहाँ पर इसको मिनिमाइज करना है। कैसे मिनिमाइज करेंगे हम, यहाँ पर इक्वल्स टू क्या करेंगे, क्लस्टरिंग करेंगे। हम जो डिस्टेंस को कम करते हैं तो वो कौन सा मेथड यूज करते हैं मैथ्स में, सम ऑफ स्क्वायर्स यूज करते हैं ना, लीस्ट स्क्वायर मेथड जो सिंपल। लेकिन मैंने यहाँ पर सिंपल क्या किया, टेक दिस CGPA SQRT इज द फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। टेक द फर्स्ट वैल्यू, इंस्टेड यहाँ पर 2 फंक्शंस हैं, ठीक है। द फर्स्ट वैल्यू माइनस जो इस सेंट्रोइड की वैल्यू है, दिस माइनस दिस एंड होल स्क्वायर, प्लस यू कैन डू दिस थिंग इन 2 मिनट्स इन कोलैब, बट मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि मैन्युअली पहले आप जानिए कि आप करता क्या कैसे काम। प्लस नेक्स्ट टाइम आई हैव टेकन IQ, क्योंकि मैं दोनों के रिलेशन को चेक कर रही हूँ। सो IQ माइनस दिस पॉइंट रेज टू पावर 2, स्क्वायरिंग कर दी, y स्क्वायरिंग। अगर आप नॉर्मल नेगेटिव्स कर
and you will get this answer. Shall I show the formula also? Yes, ma'am. मैम हमें बस हमने एक्सप्लेन कर रही है करा क्या है. मैम ये हम क्या कर रहे हैं, जैसे CGPA का फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से माइनस कर रहे हैं जो हमने मैनुअली लिया है कोई भी पॉइंट. हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको एक तरीके से स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर्मूला कैसे मैं अभी दिखाई दूँगी ना, बस एक मिनट. हम क्या कर रहे हैं, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट का होल स्क्वायर, सिमिलरली दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट का होल स्क्वायर, ठीक है. स्क्वायरिंग क्योंकि अवॉइड द नेगेटिव और स्क्वायर रूट ले लिया फिर ताकि उसी वैल्यू पर आ जाए. इसको करने से क्या होगा, वो क्या कर रहा है, उस पॉइंट को इस तरीके से बना रहा है कि वो पॉइंट का डिस्टेंस कम होता चल रहा है. रेग्रेशन में भी तो हम यही करते हैं मैम. एक्चुअली बोर्ड और ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं. नहीं फॉर्मूला तो मैं पेस्ट कर दूंगी. आई वांट टू ड्रॉ. मैम थोड़ा सा बोर्ड इस साइड से दिख रहा है, इस साइड कोई बात नहीं, कल बता दूँगी. अभी तो पहले आप ये कर लो, ठीक है. फॉर्मूला मैं बता दूँगी. अब आई हैव कनेक्टेड ना, कर सकते हैं, कर दो. के साथ भी हो जाता है. हो जाता है तो हाँ, मतलब हमारे लैब में तो हो जाता है. उसी के ऊपर चल जाता है. इसको मुझे साइड में प्लीज सुनो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पॉइंट्स है आपके पास. मैं कहती हूँ कि आपको ये बेस्ट फिट लाइन ऐसी बनाओ जिससे कि वो मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर कर ले, ठीक है. सो वन पर्सन सेज दिस लाइन इज बेस्ट फॉर मी. आई से नो अकॉर्डिंग टू मी दिस लाइन शुड बी बेटर. अब हाउ विल यू इवैल्यूएट दैट which line is the better one? वो क्या करेगा? In order to evaluate which line is the best, it will find out the difference of this line from each point. इससे और जिस लाइन पे आपका वो डिस्टेंस सबसे कम आएगा प्लस करके, लीस्ट स्क्वायर मेथड यही तो होता है ना मैम. तो जिस मेथड पे सबसे कम डिस्टेंस आ जाए यू विल चूज दैट लाइन. सिमिलर इज द मेथड हियर. अब आपने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर आपने पॉइंट्स रखे हैं. मैं कह रही हूँ एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट इनिशियली मैंने ये जो 3 सेंट्रॉइड्स बनाए हैं, 3 जो पॉइंट्स बनाए हैं, मैं ये नहीं ना ये कह रही हूँ कि ये 3 पॉइंट्स मैंने दे दिए. बट नाउ मशीन विल डिसाइड कि इन पॉइंट्स को कहाँ पर लेकर आना है ताकि वो पॉइंट जो है वो बेस्ट पॉइंट बन जाए. मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, मशीन कहेगी वो हर बार डिस्टेंस कैलकुलेट कर रही है और एट लास्ट इट विल कम टू दिस पॉइंट. तो उस पॉइंट तक आने के लिए जो मेथडोलॉजी है वो हम यूज कर रहे हैं. रन टाइम पर वेट्स, रन टाइम पर ये पॉइंट आपका इधर से इधर, इधर से इधर आ रहा है और जब चेंज होता चला जा रहा है एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये पॉइंट मूव ही नहीं करेगा, ये पॉइंट स्टैग्नेट हो जाएगा. बस वहाँ तक हमें ट्रेनिंग करनी है. हम अभी तक जितना भी डेटा सेट एक्सेस करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, आप पूरा डेटा कितने लोगों ने अभी तक एक्सेल पर रिग्रेशन यूज़ किया है ना. आप पूरा डेटा ले लेते हो. मैंने पाइथन पे करा है. पाइथन कितने, हाँ एक्सेल पे जब आप डेटा करते हो तो आप पूरा डेटा लेते हो. हाउ विल यू इवैल्यूएट दैट योर मॉडल इज रिग्रेशन मॉडल इज गिविंग यू दी बेटर आउटपुट? कैसे पता लगाते हो? बस आर स्क्वायर दे देता है. एडजस्टेड आर स्क्वायर होता है, एक आर स्क्वायर भी होता है. दोनों में अलग अलग चीज़ें होती है दोनों, है ना. क्या आपने उस डेटा को कभी भी अनसीन डेटा के साथ वर्क किया है? एक अनसीन डेटा पे आप चेक करिए कि क्या वाकई में आर स्क्वायर वैल्यू आ रही है. ठीक, मैंने आपने क्या किया, आप एक सिंपल सा एग्जाम्पल, जब आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो क्या आप उसको पूरे का पूरा पेपर लीक कर देते हैं? नहीं करते ना. हम क्या कराते हैं, उसको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं. 10 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 60 क्वेश्चन हम सिखाएंगे और बोलते हैं 4 खुद करके बताओ. अगर वो 4 में पास हो रहा है तो दैट मीन्स मेरा पढ़ाने का तरीका ठीक है और उसके पढ़ने का भी तरीका ठीक है. और अगर नहीं कर पा रहा तो दैट मीन्स ट्रेनिंग में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, दैट मीन्स टेस्ट ठीक से नहीं दे रहा. ठीक है. तो इसीलिए व्हेन मशीन लर्निंग कम्स इनटू एक्शन, यू आर डिवाइडिंग द डेटा इनटू ट्रेन एंड टेस्ट. ट्रेन करो, अब टेस्ट करके दिखाओ. अगर टेस्ट पे आपका डेटा बेटर आ रहा है तो वो वही हम सीखेंगे कल वाले हाल. ठीक है. अभी फिलहाल पता है कि हम ये पॉइंट्स को किस तरीके से मूव करते जा रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट दी मिनिमाइज्ड एरर इन आवर डेटा. -1 0
1.5 तीनों पे लगाएंगे। हाँ 3 सेंट्रोइड्स है ना मेरे मैम, जो सेंट्रोइड 1 है वो IQ और CGP दोनों को मिला के बना ना। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे C1 जो सेंट्रोइड 1 है CGP और IQ का मिला के बन गया। सिमिलरली अब आपने बस इसको क्या किया, नहीं अभी रुक जाइए, ये ठीक नहीं है डेटा। प्रॉब्लम क्या है इसमें, जब मैं इसको ट्रैक करूँगी मैम वो नीचे की वैल्यू फ्रीज नहीं है, बिल्कुल फ्रीज नहीं है, तो यहाँ पर H2 विल रिमेन सेम बट K2 विल बी फ्रीज्ड। सिमिलरली K8 विल ऑल्सो बी फ्रीज्ड। F4 प्रेस करना है आपको दोनों के लिए, फ्रीज करना है आपको दोनों के डेटा को। एंड नाउ ये वैल्यू तो सेम रहेगी, अब बस जब आप इसको ड्रैग करोगे so you will get some values। ठीक है। Similarly for C2 also I am copying the same thing, just a difference क्या रहेगा, the H2 and I2 will remain same, the only difference will be K7 will become L7 and K8 will become L8। Bracket। Similarly for the last centroid also I am doing the same thing। H2 I2 will remain same, instead of L it will be M, and in both the cases L will change to L। I hope you are getting the same values। Different है।
or anyhow. So next thing is, once we have got these three values, now we have to minimize these values. How? From these 3 points, we will find out the location of the minimum value out of these. So what we are doing, we are finding out the minimum value here is 0.6, right? And what is the location of this value? 1, 2, 3, so the location is 2. Similarly, what is the minimum value over here? The minimum value is 1.1. And what will be the location again? 2. So we are finding out the location of each value. Just drag it. And we have got the location of the minimum value of the center. Doubt. अच्छा, why are we using match function? नहीं. Match function किस लिए होता है? It is just like your lookup value. It gives you the location based on the pattern that you are doing. यहाँ पे मैंने minimum दिया, minimum करके उसने location बता दी. बस यही किया. हाँ जी. हमने मिनिमम निकाला है, तीनों में से जो सा भी मिनिमम है उसकी लोकेशन निकाल दी थी. वो आगे समझ में आ गया हो क्या रहा है. बस मुझे आप ये बताओ, सिंटेक्स में पूछना है. मैच फंक्शन लगेगा मिनिमम ऑफ n2 से n2 से बीच का मिनिमम. फिर ये n2 से ये Again, ये इसका मतलब अच्छा रेंज, ठीक है. सर्च यहाँ से रेंज और सर्च टाइप 0 जैसे लुकअप में करते हैं ना, 0 और 1, अप्रॉक्सीमेट और 0. I hope you have all got the location. लोकेशन का फॉर्मूला मैम ये रखा थी, मैंने लिखा हुआ है. Done? Okay. Next thing is, you just save this worksheet when you are done with it. Okay, ये manual representation है clustering की. मैथ से मैम हम क्या कर रहे हैं? हमने minimum value निकाली. What we have done, we have found out the minimum value based on these 3 values. Which one is the minimum? This one is the minimum. After finding out the minimum, it will find out the location. 1, 2, 3. So second location पर minimum value है ना, तो 2 will be the answer. Similarly, अगर जैसे यहाँ पर 1 आया, तो this and यहाँ पर 0.9 is the minimum value. तो कौन सी location है? First location. Next function is average if function. Average if function हम लोग location पर लगा रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं? We are finding out if it is centroid 1. अगर centroid 1 है, तो क्या करेगा वो? इस पूरे के पूरे सेल पर, पूरे के पूरे कॉलम पर तो चेक करेगा. अगर 1 वैल्यू है, तो corresponding to 1 value, it will give me the value of CGPA and IQ. Similarly, अगर centroid 2 है, तो further मुझे इस तरीके से वैल्यू देना चाहिए. This is the location. I am freezing this location because the column will remain same always. The centroid is 1 here, है ना, first location है. और इसकी वैल्यू चाहिए मुझे CGPA, फर्स्ट कॉलम. जो ये वाला कॉलम है ना, हम इसी पर वर्क कर रहे हैं. हम वेट्स मिनिमाइज कर रहे हैं, मैनुअली वेट मिनिमाइज कर रहे हैं, जो एक्चुअली मशीन लर्निंग करता है. ठीक है, कॉमा. नाउ आई हैव सिलेक्टेड दिस CGPA जो आपने स्टैंडर्डाइज किया हुआ था. And I am freezing it here. I am giving the formula also. Formula.
कॉलम है CGPA का जो स्टैंडर्डाइज करके आया हुआ था, जो एक्चुअल CGPA था ना स्टैंडर्डाइज वाला, वो ई कॉलम है। हाँ वो ठीक है, मतलब उस हिसाब से आप लोग कर लेना। Average it means what am I doing? I am finding out the location 1 here. ठीक है, इस पूरे कॉलम पर we need to find out the location 1. So here we have got the location 1. इसके corresponding जो भी CGPA था मेरा वो उसको ले लेगा, ठीक है। So this one, 1, 2 and 3, अभी मैं इस पे वर्क करके दिखाती हूँ। आपका मतलब मैम ये है कि जिसमें भी ये ही CGPA की वैल्यू जिस पर वैल्यू 1 आ रही थी वो उस वैल्यू को ले लेगा और इन वैल्यूज को लेके वो उनका एवरेज निकाल कर मुझे दे देगा। मैम हम ये अरेंज मतलब इससे नहीं असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर से नहीं कर सकते? मैम अगर आप असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर डेटा को दे दोगे फिर तो आपने बिल्कुल आसान कर दिया ना सारा काम। मतलब हम इतना लगभग करके ये तो मैं आपको मैनुअली सिखा रही हूँ, इसीलिए मशीन तो अपने आप कर देगी ये काम। लेकिन मैं आपको ये कहती हूँ जो आपने 5x निकाला वो आपने अपनी लर्निंग से बनाया ना, क्योंकि हमें बहुत छोटा डेटा था, हमने पैटर्न निकाली लेकिन लर्निंग से आया हमारी। हम इस डेटा के बैक एंड को अगर नहीं समझेंगे तो मशीन क्या कर रही है हमें पता ही नहीं है, मशीन ने तो हमें आउटपुट दे दिया। ये लंबे स्टेप्स क्या ये अभी आपको बता दूं, इसमें 5 मिनट्स आप रुकिए, हम जैसे ही स्टेप आएगा ना यू विल गेट टू नो व्हाट चेंज वी आर फाइंडिंग। ठीक है, बिल्कुल। और सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग अगर करते तो मैं फिर मशीन लर्निंग की जरूरत ही नहीं थी। अभी बस आप 2 मिनट दीजिए मुझे, हार्डली बस एक टेबल बनते यू विल गेट द आंसर। Similarly, for IQ also I will do the same thing. The only difference will be my CGPA column was H and my IQ column will be I. So I am changing this H into I. यहाँ पर सेंट्रॉइड 2 के लिए the only difference that I will get is 1 की जगह मुझे यहाँ पर 2 करना है, सेकेंड लोकेशन आ जाएगी। H की जगह just a minute, I have made some mistake I think. Centroid 1 is H. मैम वो आपको ऊपर नीचे रख होगा। हाँ, I2 क्या है? I2 मेरा IQ मेरा देखिए पहले डेटा को देखते हैं। दिस इज H एंड I, मेरा जो स्टैंडर्डाइज था जो H और I कॉलम पर है CGPA एंड IQ, आपको इसका ध्यान रखना है, बस ये टेबल आपको ध्यान रखना है। चलो मैम हो गया, 7 वालों का हो गया। C2 का I have just changed the location. इसका ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला बिल्कुल सेम है, जस्ट द वैल्यू इज डिफरेंट। जो कॉमा 1 लगाया था ना उसकी जगह यहाँ पर 2 हो जाए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप जब बस ड्रैग करिए एंड 1 की जगह सेकेंड कॉलम में आपका आ जाएगा 2 and in the last column you will get 3 as the value. आप सिंपल जब इस फॉर्मूले को सिलेक्ट करते हैं तो भी आपको फॉर्मूला बता देता है कि कौन कौन से कॉलम सिलेक्ट हो रहे हैं। सी लोकेशन सिलेक्ट हो रहा है और CGPA सिलेक्ट हो रहा है, तो आप क्या मतलब फाइंड आउट कर सकते हो बहुत आराम से, कहीं मिस्टेक होगी तो पता लग जाएगा। सिमिलरली if I am clicking here again location and IQ, तो बिल्कुल ठीक है मेरा फार्मूला, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कहीं पर। So now see the difference। एक मेरा टेबल ये है
randomized weights दिए, -1.0, 0, 1.5, ये रैंडम वैल्यूज थी. अब उसने इन रैंडम वैल्यूज को चेंज किया, ऑप्टिमाइज किया टू फर्स्ट लेवल, एंड द फर्स्ट लेवल इज दिस. यहाँ पर यू हैव गॉट द अपडेटेड वैल्यू, द फर्स्ट अपडेटेड वैल्यू. नाउ व्हाट विल आई डू? अब मुझे कहीं कुछ चेंज नहीं करना है, बस आप क्या करेंगे, कॉपी कंट्रोल सी, आप कहीं पर भी इसको पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट वैल्यूज करिएगा, अगेन कंट्रोल सी जो आपका ये फिक्स है, और आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए. सी जैसे ही आपने ये वैल्यूज यहाँ पर पेस्ट की, अपने आप आपका पूरा टेबल चेंज होता चला गया. नाउ लोकेशन इज बीइंग अपडेटेड, और आपका ये टेबल भी अपडेट हो गया. किसका नहीं आना? कौन सा? C1 आपने फॉर्मूला ठीक लगाया. ये लोकेशन का पूरा रेंज है ना, एवरेज ए लोकेशन पूरी रेंज, लोकेशन की पूरी रेंज को फिक्स कर रहा है, फिक्स कर दिया, कॉमा 1, कॉमा यहाँ के लिए दिस इज माय CGPA. तो CGPA का जो भी कॉलम था आप उस पर जाइए और उसको सिलेक्ट करिए पूरे का पूरा, जो स्टैंडर्डाइज वाला था वो वाला. ठीक है, स्टैंडर्डाइज हो गया. जो सबसे पहले स्टूडेंट होगा पूछ रहा है. जो सबसे पहले मिला था वही वाला डेटा ना, CGPA का जो 7.2 वाला स्टैंडर्डाइज के बाद 0 पॉइंट वाला, 0 पॉइंट मैम स्टैंडर्डाइज डेटा पर वर्क कर रहा है. हमारा बैकएंड हमेशा स्टैंडर्डाइज पर ही वर्क करता है. ये वाले पे C1 से 2 वाले नहीं, H2 से H2 ये रहा, मैं दिखाती हूँ, ये रहा. अच्छा 0.38 वाला यानी ये कर सकते हैं. When we paste our values, तो आपकी values change कैसे हो रही है हमारी, तो ऊपर change हो रहा है. सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी. मैं फिर से करके दिखाती हूँ. देखो ये कॉपी किया, कंट्रोल सी, आई हैव पेस्टेड इट ओवर हियर. द डिफरेंस हियर इज आई हैव पेस्टेड इट विद वैल्यू, कांस्टेंट करा. अब अगेन इसको कॉपी किया इन ऑर्डर टू शो यू. देखो इनिशियल वेट्स हमारे क्या थे, 1.5, 0, 1.5 थे ना. अब हमारे अपडेटेड वेट्स क्या है, -1.07, 0.05. हम अपडेट कर रहे हैं वेट को. ठीक है, सो आई हैव कॉपीड हियर एंड पेस्टेड इट अगेन इन माय बेस टेबल, जहां पर मैंने रैंडम वैल्यूज दी थी. नेक्स्ट सेम ही आ रहा है. मैंने आपका 1.07 आ रहा है, मेरा 1.19 आ रहा है. और वहाँ पे मैम आपका फर्स्ट आइट्रेशन है, मैं सेकंड आइट्रेशन पे पहुंच गई. देखिए ये सेकंड आइट्रेशन है मेरी, कंट्रोल सी. मैंने यहाँ पर मेरी फर्स्ट आइट्रेशन एक जस्ट हाँ ये वाली रुक जाइए बस एक मिनट. ठीक है, आपका इनिशियल आंसर जो फर्स्ट आइट्रेशन पर आया होगा, ये आइट्रेशन आपकी फर्स्ट आइट्रेशन है. यही आंसर आया था -1.19 है ना, यही है. और दूसरे सेकंड अभी यहाँ पर सेकंड आइट्रेशन पर अभी हम वर्क करते हैं. हमने क्या किया, इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, एज इट इज पेस्ट किया है, कुछ नहीं किया. और उसको हमने मेन टेबल में भी पेस्ट कर दिया. एक मिनट, एक्चुअली वैल्यू चलेंगे, सो इसीलिए मैंने एक अलग जगह पर पेस्ट करवाया उसको पहले, और फिर यहाँ पर पेस्ट. C2 में आपने क्या फॉर्मूला लगाया होगा? C2 में एवरेज में कौन सी वैल्यू फिक्स सेम करोगे? 1 की जगह 2 की करोगे. पहले वैल्यू फिक्स करोगे. सेंट्रॉइड 2 पे 2 लोकेशन, जहाँ पर आपने 1 रखा था ना, वहाँ पर आप 2 कर दो. और 3 पे 3 पे 3 कर दो. फर्स्ट सेकंड थर्ड लोकेशन की वैल्यूज को मैं एवरेज आउट कर. ठीक है, नाउ आफ्टर गिविंग these weights, new weights to your base table, again you are getting new weights. Again the weights are optimized. दोबारा से इसको पेस्ट करिए अपने बेस टेबल पर जो आपने रैंडमाइज किया है. This is the table.
Again the values are changed. Then अब एक चेंज देखते हैं, क्या कोई ऐसी वैल्यू है किसी भी सेंट्रॉइड की जो थोड़ा सा फिक्स होनी शुरू हुई है? अगर आप कंपेयर करो, कोई एक वैल्यू जो थोड़ी थोड़ी कंपेयर होनी शुरू हो गई है। देखिए ये पूरा टेबल है जहाँ पर मैं वेट्स को सब सारे वेट्स दिखा रही हूँ आपको। दिस वॉज इन द फर्स्ट आइट्रेशन, ये फर्स्ट आइट्रेशन थी, ये मेरी सेकेंड आइट्रेशन है, ये मेरी थर्ड आइट्रेशन है। और मैं हर बार वेट्स को ऑप्टिमाइज कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर देखो 1.24 है, यहाँ पर 1.23 आ गया है, क्वाइट कंपेयर है। दोबारा से यही काम करते हैं, कल देखते हैं। नाउ अगेन आई एम कॉपिंग इट and pasting it in my initial table. अभी और ऑप्टिमाइज होता चला जा रहा है, है ना? अभी देखते और मशीन भी यही करती है, जब तक वो फिक्स नहीं हो जाता, एक स्टैग्नेंट वेट नहीं आ जाता। अभी लेकिन अभी चल रहा है ना, तो आप करते जाइए। हाँ, 7th आइट्रेशन पर फिक्स हो रहा है, ठीक है, 7th आइट्रेशन तक आप वर्क करिए फिर। जहाँ पर आपका फिक्स होगा वहाँ पर जस्ट स्टॉप द ट्रेनिंग, उसके बियॉन्ड वो वर्क नहीं करेगा। तो एंड वी हैव स्टेबलाइज्ड द वेट्स, है ना? बिल्कुल सेम रिजल्ट आ रहा है। अब आप चेक करोगे तो जो मेरे लास्ट वेट्स थे और जो मेरे अब अपडेटेड वेट्स हैं वो बिल्कुल सेम है, इसके बियॉन्ड लर्निंग नहीं हो सकती। दिस इज द मिनिमा दैट वी हैव गॉट। After 6th iteration, answer is same. सेम, हाँ, तो 6th iteration इज द लास्ट वन। मैंने 8 iteration को follow यही मशीन लर्निंग कर रहा है बैकएंड पे। वो रैंडम कुछ भी देता है और वो आगे आगे चलता चला जाता है जब तक उसको वो मिनिमाइज्ड वेट नहीं मिल जाता, जहाँ पर डिस्टेंस सबसे कम हो जाता है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? मैम मैं आपको वही बता रही हूँ, जैसे मैंने आपको अभी समझाया था ना, इसका कि तो यहाँ पे रुकिए, क्या मतलब है कि नाउ फिर आई स्टॉप लर्निंग? यस, देखिए अभी तक हमारे पॉइंट्स ऐसे थे, कुछ ऐसा डेटा था। वी सेट 3 points should be here. It started with these points. ठीक है, नाउ हर आइट्रेशन पर वो क्या कर रहा है, वो डिस्टेंस निकाल रहा है इस पॉइंट का इस पॉइंट के साथ, सब इनफैक्ट सब पॉइंट्स का। जिससे कोई एवरेज डिस्टेंस हाँ,
इस क्लस्टर में आना चाहिए। ठीक है, हम डिस्ट्रिक्ट के मीन्स क्लस्टरिंग कह रहे हैं। हम क्या करें, कौन सा पॉइंट, कौन सा बच्चा कौन से क्लस्टर में आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ मैनुअली तो आप फिल्टर आउट करके बहुत आराम से कर लोगे अगर बहुत छोटा डेटा आपके पास है। लेकिन आपके पास जब नेटफ्लिक्स का डेटा आता है, गूगल एनालिटिक्स का डेटा आता है, तो मैम बहुत बड़ा डेटा होता है। इट इज़ नॉट ईजी फॉर यू टू फाइंड आउट योर इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पर आपको ये डेटा इस तरीके से चेक करना पड़ेगा। आपको क्या कर रहा है, इस पॉइंट को हिला रहा है। 3 क्लस्टर्स, जब हमने क्लस्टर्स बनाए तो वो बता रहा है 3 क्लस्टर है, 3 पॉइंट्स बना दो, लेकिन उन पॉइंट्स को मूव करो इस तरीके से कि ये सारे पॉइंट्स इस क्लस्टर को बिलोंग करें। ठीक है, हाँ ग्रुपिंग ही तो कर रहा है इनिशियली। ठीक है, अब आपका ये काम कंप्लीट हो चुका है। अभी तक आपने बस, अब आपने क्या किया, सेंट्रॉइड्स बना दिए, क्लस्टर्स बन गए, लेकिन मुझे दिख नहीं रहे वो क्लस्टर्स कहाँ हैं। सो नाउ व्हाट विल आई डू, लेट्स फाइंड आउट कि वो जो मेरे क्लस्टर्स हैं उनका पॉइंट एग्जैक्टली अब क्या है। तो लेट्स सपोज C1, 3 क्लस्टर्स है मेरे पास। अच्छा, लैपटॉप से अच्छा, ठीक है। नाउ आई विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who lie in this cluster C1 में। क्लस्टर 1 में कितने स्टूडेंट्स हैं, क्लस्टर 2 में कितने स्टूडेंट्स हैं और क्लस्टर 3 में कितने स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट, कितना CGPA होना चाहिए उनका, एंड नेक्स्ट इज क्या IQ है उन स्टूडेंट्स का, एवरेज IQ, एवरेज। तो सेंट्रॉइड 1 की अगर मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं तो क्या करेंगे, इक्वल्स टू काउंट, इफ फंक्शन लगाएंगे। लोकेशन पता है बस मुझे, मेरी लोकेशन जो है वो अपडेट हो चुकी है। सो दिस इज द लोकेशन। ये मैं आपको न्यू शीट पे करती हूँ, बहुत बड़ी शीट हो गई है ना, नहीं अब का डेटा की जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, मैं कॉपी कर दूँगी। एक्चुअली आप लोगों को अब करना ही पड़ेगा न्यू शीट पे, जस्ट सिखा दी। So I am taking out 3 things from my main data. The first is the actual CGPA and the IQ. अब आप actual पे आ जाओ। अब मेरा standardize हो गया, weights normalize हो गए, सब कुछ हो गया। अब मैं main data पर work कर रही हूँ। ठीक है? And the third thing which I need here is location. So I will just copy the location feed from here and paste it over here. अब यहाँ पर ये references बोल रहा है तो please make sure you paste values. ठीक है? So now I will calculate the number of students in each cluster. Cluster 1, cluster 2 and cluster 3. So here equals to count if function, find out, this is the range finally, cluster 1 में कितने points lie करते हैं, I will select the data, freeze it, comma, 1 location कितनों की है. I got 67 students who are falling in cluster 1. Similarly, dragging it out and just writing 2 for the second cluster and 3 for the third cluster. And the total will be कितना है? 200 का ही डेटा था, 200 ही हमारे पास स्टूडेंट्स आए, तो दैट मीन्स मेरे क्लस्टर वर्क सही कर रहे हैं। 3 क्लस्टर तो बन गए हैं। कैसे क्लस्टर? मैं यहाँ पे सिमिलरली 2 के लिए आपने सेकेंड लोकेशन दिया, थर्ड के लिए आपने थर्ड लोकेशन।
वन लोकेशन पे है उनका क्लस्टर 1 पे, जो 2 पे है वो कितने नंबर 200 में से कितने बच्चे ऐसे जो क्लस्टर 1 में आते हैं? ठीक है। अब क्लस्टर 1 का जो एवरेज सीजीपी है, ये तो मैम नॉर्मल डेटा आ गया आप लोगों के पास। अब मुझे कुछ मतलब बहुत इजी है मेरे लिए एनालाइज करना। यहाँ पर सिंपल आप एवरेज फंक्शन लगाओ, टेक आउट द लोकेशन, व्हाट इज द रेंज, दिस इज द रेंज, जिसमें से आपको फाइंड आउट करना है अगर 1 लोकेशन है तो कितना सीजीपी है एवरेज, आपने सिलेक्ट कर लिया, फ्रीज कर दिया, कॉमा 1 लोकेशन पर व्हाट इज द सीजीपी, सो आई एम जस्ट सिलेक्टिंग द डेटा। सो एवरेज सीजीपीए ऑफ क्लस्टर 1, मतलब जो पॉइंट बना है अब अगर मैं इसको समझाऊं, so if I have this kind of data, so I have got 3 clusters, ये सेंट्रोइड बन गया। ये वाला जो सेंट्रोइड है इस पर वैल्यू है 6.4, कॉमा IQ की वैल्यू क्या आएगी, किसी ने फाइंड आउट की है? ऐसे जैसे आपने CGPA की है वैसे आप IQ भी फाइंड आउट करो। ये 3 सेंट्रोइड्स बन गए और जो 67 स्टूडेंट्स हैं उनका ये क्लस्टर बन गया। सिमिलरली एक क्लस्टर ये बन गया जिसका CGPA जो भी अभी हम एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं और ये 86 का है और 47, तो मेरे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इस क्लस्टर में आ रहे हैं। अभी क्लस्टर्स बना के भी हम दिखाएंगे। ये CGPA का फॉर्मूला है। अच्छा CGPA ठीक है। Similarly, I am finding it for all the 3 centroids. बस मुझे चेंज करना है लोकेशन, and for IQ also I am just pasting the same value. The only difference will be I will take IQ वाला average. This will remain same C2 till C201 to cluster 1, and instead of I have done अच्छा हाँ ठीक है, this will be B2 till B201. यही वैल्यूज आई है सबकी, नहीं बाकियों की कराएंगे। CGPA का फॉर्मूला ये रहा, यही है वो फॉर्मूला, ये देखो ये रहा, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, एवरेज यूज किया। अटक गए सब कहीं ना कहीं। चलिए अभी तो आप ना आ रहे हैं। ठीक है, सो आई होप अब सेंट्रोइड सबके आ गए। ठीक है, नेक्स्ट is now finally what we are making the इसको कहीं पेस्ट कर दो।
मेजर आउटपुट मैं आपको दूसरी शीट पे दिखा देती हूँ, सो दैट इट विल बिकम इजी फॉर यू। This is how you will see the cluster. अभी कैसे आया ये मैं आपको समझा रही हूँ। आपने क्या किया? After that you will make these 6 columns here. C1 का CGPA, cluster 1 का CGPA IQ, cluster 2 का CGPA IQ, cluster 3 का CGPA IQ. 6 columns you have to make first, and then this is the formula that you will use if the location is 1. Take the CGPA. अगर फर्स्ट सेल की लोकेशन 1 है तो आप उसका CGPA ले लो, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली अब जैसे अगर मैं बात करूँ फर्स्ट रो की, तो ये लोकेशन 2 है, तो दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू सेंटरॉइड 2। तो सेंटरॉइड 2 पे दोनों वैल्यूज आ गई, दोनों से बाकी सेंटरॉइड्स खाली है। सो द फॉर्मूला इज दिस वन। आप सीख लो, कोई बात नहीं, अभी आप देख लो कि कैसे बना। मेजर जो मुझे सिखाना था वो वेट ऑप्टिमाइजेशन सिखाना था, ठीक है। और उसके बाद जो आप फाइनल क्लस्टर्स बनाओगे वो देखो, ये क्लस्टर्स ये इस टेबल से बनाना है। मैं बताती हूँ, अगर सीखना है तो मैं बता देती हूँ, सिखा। अब मेरे पास 3 क्लस्टर्स हो गए, दो these are overlapping clusters, लेकिन बट तब भी मुझे क्लस्टर्स नजर आ रहे हैं कि मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं दैट मीन्स 5.5 से लेकर 6.5 तक का IQ इतना है, अप्रॉक्सीमेटली 100 to 120। इससे आप ग्रुपिंग कर पा रहे हो अपने CGPA की और IQ, जो आप रॉ डेटा पर नहीं कर पाते। एंड दिस सेंटरॉइड सजेस्ट, जो आपने वो टेबल बनाया है ना कि सेंटरॉइड जो है वैल्यू, showing me 7.4 CGPA and 103 as the average and the average of CGPA and IQ. इसके बाद आप प्लीज कोलैब ओपन कर दीजिए। कोलैब में इट विल हार्डली टेक 1 minute to do this. This is the formula. अलग अलग हो जाएगा ना मैम, बस 2 1 के लिए। हाँ लोकेशन, फर्स्ट सेल लोकेशन की लेगी, कॉमा, अगर फर्स्ट लोकेशन के लिए सर्च करें तो इक्वल टू 1 लिखोगे, सेंटरॉइड 2 के लिए आप 2 लिखोगे। आई फॉरवर्ड दिस शीट टू यू, ठीक है, सो दैट यू कैन एनालाइज दिस स्टेप बाय स्टेप। A8 इज CGPA की फर्स्ट वैल्यू ले लेगा ना, अगर सेकंड वैल्यू पे वो लोकेशन पर है तो, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल वैल्यू। Just use ChatGPT now. Use ChatGPT please everyone, है ना। आप बिल्कुल इजी मेथड हम यूज करते हैं क्योंकि आपको बैकएंड आ गया, ठीक है। Use ChatGPT. आप लोग give this data to ChatGPT now. Give this data. जो नॉर्मल रॉ डेटा था जो आपकी एक्सेल शीट था, आप सिर्फ वो डेटा देंगे ChatGPT।
बिल्कुल एक्सेल वाली शीट मैं फॉरवर्ड कर दूँगी अभी, ठीक है। मेन था वेट ऑप्टिमाइजेशन के बाद, ठीक है। शीट का आउटपुट ठीक है। चैट जीपीटी ओपन करते हैं, चलिए मैं साथ साथ करती हूँ कि एआई से कितना इजी हो जाता है। देखिए एआई से मैंने ये पूरा कोड लिया है, आई डिडंट अप्लाई एनी माइंड हियर। मैंने क्या किया यहाँ पर, अब बस आप क्रॉस चेक करिए जो चीज़ आपने मैनुअली की थी वो यहाँ पर कितना आपसे मैच कर रहा है। योर क्लस्टर 1 का जो डेटा था, मतलब 3 क्लस्टर्स थे और क्लस्टर 1 का या क्लस्टर 2 का जो आपका एवरेज आएगी वो क्या यही इसके आसपास है या नहीं है। आपने जो टेबल बनाया होगा वो एक्चुअली इन वैल्यूज के आसपास होगा। हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर डिस्टेंस आ रहा होगा, है ना, आया हुआ डिस्टेंस सेम है बिल्कुल। नहीं ये तो आउटपुट है। जस्ट लुक एट योर टेबल, दिस वाज गिवन बाय कोलैप्स, ऑलमोस्ट सेम है ना। तो आप देखो जो आपने मैनुअली किया वो थोड़ा सा मेथड मशीन लर्निंग का डिफर करेगा, क्योंकि अगर आप रेग्रेशन की भी बात करें तो रेग्रेशन को करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। एक लीस्ट स्क्वायर मेथड होता है आपका जो आप यूज करते हो। मैं कहती हूँ मुझे लीस्ट स्क्वायर मेथड नहीं आता, आई विल टेक एनी रैंडम वैल्यू ऑफ एमएससी एंड मैं कहती हूँ चलाते चलो कहीं तो कोई एम और सी की ऐसी वैल्यू आएगी रैंडमाइज जो ऑप्टिमम वैल्यू बन जाएगी मेरी। अगर मैं किसी भी लेमैन को बोलूँगी तो वो कोई इक्वेशन जिसको नहीं आती तो वो एम और सी की वैल्यू ही लगाएगा, वो कोई स्क्वायरिंग मेथड यूज ही नहीं करेगा। तो जो आपने मेथड यूज किया और जो यहाँ पर मेथड मशीन ने यूज किया, आप जस्ट चेक आउट द आउटपुट और इसका ये जो डेटा है प्लॉट है, डेसिमल्स में डिफरेंस। बस वही मैं कह रही हूँ हार्डली, क्योंकि अगेन इट इज अ ब्लैक बॉक्स, मुझे नहीं पता क्या है। कोलैब को मैंने सिंपली डेटा दिया और उसको बोला इसकी की मींस क्लस्टरिंग का एल्गोरिथम मुझे बनाकर दे दो, ठीक है। अब उसने जब एल्गोरिथम बना के दे दिया, see it is using 3 libraries here, 4 are 3 pandas, matplotlib होता है जब आप प्लॉट करते हो, sklearn होता है k means क्लस्टरिंग के लिए एंड स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। तो आप जो मैनुअली स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हो वो उसने ऑलरेडी स्टैंडर्ड स्केलर लगा दिया ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट इट इज आस्किंग यू टू अपलोड द फाइल, कुछ भी नहीं, आप जैसे ही इसको रन करोगे इट विल आस्क यू टू अपलोड द फाइल। आपने रॉ फाइल अपनी अपलोड कर दी। नाउ ये फर्स्ट रीड करें उसने इस एक्सेल को, आफ्टर दैट हेड मीन्स वो फर्स्ट 5 रोज आपको दे देगा बस व्यू करने के लिए, जस्ट टू शो दैट योर डेटा हैज बीन अपलोडेड। नेक्स्ट वी हैव, अब आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, मेक श्योर व्हाटएवर यू आर राइटिंग हियर, जैसे अगर आपका आईक्यू और कॉलम नेम जो भी है वो कॉलम नेम आपका एग्जैक्ट यहाँ पर ऐसे ही होना चाहिए। अगर मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है इमोशनल इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंट क्वेश्चन, तो यहाँ पर भी आपको आईक्यू की जगह इंटेलिजेंस क्वेश्चन ही देना पड़ेगा। मेक श्योर योर कॉलम नेम, वो कौन कौन से कॉलम से एक्सट्रैक्ट कर रहा है, इट इज एक्सट्रैक्टिंग दीज 2 कॉलम्स फ्रॉम योर एंटायर डेटा सेट एंड इट इज कीपिंग इट इनटू अ डेटा फ्रेम, एक पूरा नेक्स्ट इट अप्लाई। आप सिंपल डेटा दो उसको और उसको बोलो कि आपको लैब में मुझे के मीन्स का कोड दे दो, दैट्स इट। के मीन्स क्लस्टरिंग जो होती है, जो सबसे बेसिक क्लस्टरिंग होती है वो के मीन्स क्लस्टरिंग होती है। फिर आप और हायरार्किकल क्लस्टरिंग होती है जो उसमें आप क्या करते हो, बहुत अगर जितना आपका डेटा है उतने क्लस्टर्स बना देते हो और फिर वो क्या करते हैं, वो आइडेंटिफाई करता है पैटर्न को जो सिमिलर पैटर्न्स होते हैं। चैट जीपीटी को जैसे यहाँ पर जो आप डेटा दो, ठीक है, आप दोगे ये आपको दे देगा। After that, what it has done after standardizing the data, clusters इसने निकाल लिए। Random state 42 ये हम कल करेंगे कि what is random state। आज जब हम clustering करते हैं तो हम entire data देते हैं,
कोई भी वैसा डेटा नहीं देते मतलब जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं। एंटायर डेटा विल बी गिवन टू यू, गिवन टू दी प्रोग्राम। आफ्टर दैट उसने प्रिडिक्ट किया, क्लस्टर्स लगाए, सेंटर उसने कुछ भी लगाने के बाद यहाँ पर के मीन्स क्लस्टर मीन्स कि जब आप वेट ऑप्टिमाइज होते चले जाएंगे, जैसे आपने मैनुअली किया है ये सब कुछ मशीन पर करेगा, आपको नजर ही नहीं आएगा कि किस तरीके से काम चल रहा है। प्लॉट करता चला जाएगा एंड आफ्टर दैट ही देखिए दिस इज द डेटा फाइनली कि कौन से क्लस्टर में ये वैल्यू आती चली जाएगी। क्लस्टर 0 हमने 1 2 3 लिया है, क्लस्टर स्टार्ट फ्रॉम 0 0 1 2 एंड वी हैव गॉट दिस टाइप ऑफ डेटा। सेम डेटा है जो हमने एक्सेल में बनाया था, ये देखिए दिस इज माय डेटा एंड दिस इज कोलैप्स डेटा। हम जब कोई भी रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं तो प्लीज़ डोंट यूज़ एक्सेल के टेबल्स, इनके पिक्सल सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं। बहुत यूज़ होता है और भी बहुत तरीके की क्लस्टरिंग होती है जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आप अपने डेटा को विजुअलाइज करें। द फर्स्ट मेथड दैट यू शुड ऑलवेज लुक एट योर डेटा। जितना इन्फ्लुएंस आप डेटा से निकालोगे उतना ईजी होगा आपके लिए कि आपको कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करें। अगर आपका डेटा कुछ इस तरीके से आप जब प्लॉट करोगे, लेट सपोज आपका डेटा कुछ इस तरीके से आता है, दिस इज नॉट माई कॉन्टिन्यूस डेटा, ये मेरा डिस्क्रीट डेटा है और ये डेटा मेरा स्फेरिकल बन रहा है, तो इसके लिए मेरी क्लस्टरिंग के मीन्स यूज ही नहीं होगी, फिर हम और टाइप की क्लस्टरिंग यूज करें। तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा कि किस तरीके का स्कैटर प्लॉट बन रहा है और कैसा हमें बनाना है। ये आपको पढ़ के पता चले। कौन से क्रॉस है मैम? ये सेंट्रोइड्स है। सेंट्रोइड्स है मतलब इनकी वैल्यू ये रही, ये इनकी वैल्यू इसने निकाल दिया ना। इस सेंट्रोइड की वैल्यू क्या है? दिस सेंट्रोइड अकर्स एट 7.5 टू CGPA। मतलब आप अगर स्केल को देखोगे तो इस CGPA का स्केल है ये 7.52 और 103। ये एक्चुअली ये सेंट्रोइड होगा 6.4, आप देखो ना 6.41 एंड 91.5। दिस इज दी सेंट्रोइड क्लस्टर 1। क्लस्टर 2 है ये 7.52 और इसका क्लस्टर है 103 पर। क्लस्टर 0 हो रहा है, क्लस्टर 0 1 मैम उसने क्लस्टर्स बनाए, वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं देगा, वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में दे रहा है। असेंडिंग ऑर्डर में नहीं दे रहा, उसने सिर्फ क्लस्टर्स बना के दिए कि कौन कौन से क्लस्टर कौन कौन से नंबर पर लाए करें। आपने जब एक्सेल पे किया था, एक्सेल एक्चुअली असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्लस्टर्स देता है, ये आपको लाना है। मैम जब आप पैटर्न फाइंडिंग करते हो अपने डेटा में, हाँ स्टॉक जैसे अपना तो वहाँ पर भी आपको पैटर्न फाइंड आउट करने होंगे। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ कि क्या मेरी मंथली इनकम और जो मेरा परचेज है क्या इसमें कोई पैटर्न है, हम तो सीधा प्रिडिक्शन करना शुरू कर देते हैं। पहले पैटर्न तो फाइंड आउट करें कि कितने इनकम वाले लोग कितना परचेज करते हैं, वो हमें यहीं से पता चलेगा क्लस्टरिंग से। ये एक सिंपल एप्लीकेशन है। जब हमारे पास लेबल्ड डेटा आ जाएगा, जब हमारे पास आउटपुट भी है, तब फिर हम सुपरवाइज पर मूव करते हैं। अनसुपरवाइज में हम उसी तरीके से जस्ट कलेक्ट द डेटा एंड एनालाइज, उसको उसके बारे में समझना सीखते हैं। और कोई क्वेश्चन? ये वैल्यूज पूरा सेलेक्ट किया, ठीक है, पूरा सिलेक्ट किया। ये भी बहुत बड़ा कैच है, देखिए मैंने इस पूरे डेटा को सिलेक्ट किया। तो NA वाले को उसने रिमूव कर दिया ऑटोमेटिकली। NA को रिमूव नहीं करेगा वो, हाँ NA को रिमूव वैसे तो करेगा इंसर्ट। जब आप स्कैटर प्लॉट करेंगे तो आपका स्कैटर प्लॉट बन के नहीं आएगा इनिशियली, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट डेटा, ठीक है। नाउ
आई एम जस्ट रिमूविंग एवरीथिंग। अभी तो मैंने सब रिमूव कर दिया। ऐड पे गई मैं, ठीक है, विच इज माई क्लस्टर 1, तो मैंने यहाँ पर लिखा क्लस्टर 1, जो हमारा न्यूमेरिक डेटा होता है तो इस तरीके से वर्क करना होता है, ठीक है। व्हाट इज माई एक्स वैल्यू, सो आई विल सिलेक्ट ऑल द वैल्यूज ऑफ क्लस्टर 1, ठीक है। मैं कल ले लूँगी। हाँ, अच्छा कल CGPA का क्लस्टर बना, ये CGPA का क्लस्टर बना। सिमिलरली आई विल टेक द क्लस्टर फॉर IQ, जो सेंट्रॉइड 1 का IQ, ओके किया। चलिए मैं आपको सिर्फ एक क्लस्टर बना के दिखाती हूँ। और उसी में ऐड करोगे, बस ऐड कर, देखिए मेरा एक क्लस्टर बन गया। ऐसे मैं क्लस्टर 2 बनाऊंगी, ऐड करते जाएगी, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, और फिर उसके बाद जो आपने टेबल बनाया था ना सेंट्रॉइड वाला, वो भी आप इसमें ऐड करें। उसके बाद आपका ये फाइनल देगा। मैं ये शीट आपके साथ शेयर कर रही हूँ पूरी की पूरी। इससे क्या होगा, जब आप इस ग्राफ पे क्लिक करेंगे और आप सिलेक्ट डेटा करेंगे तो आपके पास अपने आप ये देखिए सारे आ जाएंगे, सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू। I will share the link of this code. Done. अब अच्छा tell me one thing. अभी यहाँ पर तो जो हमारा क्लस्टरिंग वाला डेटा है वो सिर्फ 2 कॉलम्स का है, लेकिन जब हम डेटा किसी भी कंपनी का लेते हैं तो बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, तो क्या वहाँ पर क्लस्टरिंग पॉसिबल होगी ना? जब हम किसी भी डेटा का इन्फ्लुएंस करते हैं तो सिर्फ CGP और IQ के बेसिस पर थोड़ी ना करते हैं। लॉट कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, टेक्निकल स्किल्स हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर वहाँ पर क्लस्टर्स बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। n नंबर ऑफ कॉलम्स यू कैन टेक इन क्लस्टर। सो प्लीज टेक वन मोर एक्सरसाइज, आप इसको घर में करिएगा। CGPA, IQ, टेक्निकल स्किल्स, जो डेटा आपको समझ में आता हो आप वो लीजिए और क्लस्टर्स बनाइए। जब आपके पास बहुत सारा इनपुट वेरिएबल होते हैं तो आप डायमेंशन रिडक्शन करते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, टेक्निकल स्किल्स, या अगर आपका इंटर्नशिप का डेटा है और प्लेसमेंट, या फिर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने कोर्स लिया है और इंटर्नशिप किया है तो आप इसको क्लब करके एक कॉलम बनाते हैं। तो डायमेंशन रिडक्शन करिए, फिर क्लस्टर और सी द चेंज। सेकेंड थिंग, अगर आपका डेटा कुछ ऑलरेडी इस तरीके का है, तो क्या आप क्लस्टरिंग करोगे? विल यू डू क्लस्टरिंग? क्लस्टरिंग ऑलरेडी हो चुकी है तो नहीं करेंगे? करेंगे? क्यों कर सकते हैं? ठीक है, ये तो डेटा कह रहा है आपका कि 3 क्लस्टर्स बने हो। स्टिल विल यू डू द क्लस्टरिंग ऑन दिस डेटा? बाय I need to find the inference based on this outcome. सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ये फाइंड आउट करना है, ये जो क्लस्टर है इसका मीनिंगफुल डेटा क्या है, इसका सेंट्रोइड क्या है। तो मुझे पता चल रहा है कि मेजॉरिटी इन दिस क्लस्टर, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर देयर इन 7.5 CGPA एंड 12 IQ। तो वो बहुत ज़रूरी है फाइंड आउट। तभी तो मैं कहती हूँ कि आप लोगों का प्रेफरेंस जो है वो लव स्टोरीज का कैसे, तो वो मैंने सेंट्रोइड बना दी कि ये सारे कस्टमर्स लव स्टोरीज देखते हैं, ये सारे कस्टमर्स एक्शन मूवी देखते हैं, ये सारे हॉरर मूवीज देखते हैं। तो जब तक ये सेंटर नहीं पता आपको तब तक आप क्लस्टर नहीं कर सकते। दैट्स ऑल। Today's session a success. My sincere thanks to Rashi Agarwal ma'am. In today's session, we gain knowledge, valuable insight on machine learning, on algorithm. Thanks for teaching us many household hacks also ma'am, like data clustering along with block clustering. Your session was very informative and engaging. My sincere gratitude to Chairman sir, Management Director ma'am and HOD sir for their support. Thanks to the organizing committee and technical staff for their constant support. A big thanks to all the participants